Tinggi. Yes. He's the chat.
Yes, good morning, everyone. Someone will proceed. Good morning. We are there. That's okay. That's okay. Sit down, sir. It's not I'm forcing you. What is that with a gun? You should do it voluntarily. How's the day today? Just started. Just started. It's going to be a what is that? Great day or a good day? Depends on me. Yes. Okay. All good with you? क्या वो अबला नारी की तरफ पिक्चर दिखा रहे थे क्या होते? Hey guys, this week coming Wednesday, correct? I'm not sure that whether we have a morning class. Anybody is having the mobile? Anybody can. Everybody is having the mobile. Just check whether coming Wednesday we are meeting or not. And we had finished both. What is that? And first chapter is done. Manufacturing, I just started. Oh, very good. Classification of industries, did we start? Put that in. I would love to see that your day becomes the greatest day. Hi, morning. Who is online today? Online is Adarsh. Yes. Ayushi, how are you? Good morning, sir. Good morning. Good क्या हो morning. गया आदर्श आज online? Yes, sir. You're joining first day, is it? हाँ. Okay. And where are you from? I said, which school are you from? Sir, I used to come offline. हाँ तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ फिर तू भी हाँ बोल रहा है. What happened today online? Sir, I'm not at home. So, Not attending. not at home, so I'm Not online. at home. And Asmi, Yes, sir. who is it? Online student or offline student? Offline students. क्या हो गया अस्मी को आज फिर? Sir, I'm unwell. Okay, unwell. There is no word in English called unwell. You're not well. ठीक. Okay. Just check your notebook. Write the heading as classification of industries. Meantime, just sign. This clusters of students, shall we break them? No, please. Why? But why? Yes. But why? Is it dowry combination or what? I'm asking. Yeah. Yes.
That is what I'm making more good is it? Huh? Which chapter? Geography. Manufacturing. He's asking which chapter are we doing? Then geography. Manufacturing. Hey, I did start with manufacturing, na? Then why these guys are so confused? Geography क्यों पूछ रहा है? That मैंने तो लिखा है. क्या लिखा है? Manufacturing industry. हाँ तो फिर वो किस में आता है? पॉल साइंस में आता है क्या? हाँ तो वही है कंटिन्यू करो. Okay guys, write down classification like this. This will be A, B, C and D. देख क्या बोल रहा हूँ मैन्युफैक्चरिंग ज्योग्राफी में ही आता है हाँ कितना बड़ा डाउट है हाँ अरे ये पूछ रहा है. नहीं he is asking don't tell me write down on the basis of A on the basis of raw material use everyone write it I think it says. on the basis of raw material use. Somebody said they're not to disturb the cluster, na? And I should get that feeling that cluster is uniformly doing the work. Uniformly, without what is that? Small humming bee. Today's date is what? 21. On the basis of raw material use. Did you write? So in that, you write in separate lines, huh? And if possible, leave one line that will also be agro-based industries. Leave one line for this. Mineral-based industries. Leave one more line for this. Then consumer industries or consumer based also, we can write only consumer industries and main road industries. Leave one line for every industries, huh? Because we'll be writing certain lines. Quickly write down. Yes, sir. Why this Vaishnav is so much enjoying? क्या हो गया? Penny, Vincent's name, what happened? How school गया? Hey, where is the attendance? Quickly give it back. So now we done. Why did you forget the pouch? You don't write now. Today will be a 2 minutes. Wait. Vaishnavi, you need a pen? Don't borrow from anyone. Right after. Aaron, who doesn't know? What is FT? Industries में. Opposite of RM. Finished process goods. Finished goods. तीन में कहाँ से material है? Product. Finished product. In fact, I want to give you a very good head. You are giving me a very good head. Finished products and munching of the finger, spit out, get the pen. Finished products. So embarrassing to hear people doesn't know RM and FP. Everyone have copy? Leave one line. What's his name? Oh my dear. Leave one line for every 1 point. Leave a line. Agro base के लिए एक line छोड़. फिर हाँ वैसा line छोड़ because I'll be giving definition. Tell me. Second one. My alignment is little bit disturbed. It's not computers to realign. Okay. So second one. On the basis of ownership IP. Just check. Capital. Huh? On the basis of. Yes, my dear. I know that 4 she's are there, so they are going to create she. Oh dear, pass it there.
Yeah. Leave one line for each heading, huh? We have to write. Right. Before I repeat, Asmi and Ayushi. Ayushi is present, is it? She is there. Ayushi, you are also a regular student. Yes, sir. Offline student, but due to my treatment, I'm online. And who is Priya Prajapati then? She is absent. And Adarsh. Adarsh, your name is not Dubey. Adarsh Dubey. And Atharva Goshala and Rajiv. What is these two people? One person now Rajveer. ये भी offline में आ रहा है. Rajveer है. Wait, Ayushi है, Asmi और Adish. Write this one: small scale industries, large scale industries. Leave one line for each heading. What is the class? Yeah. So I didn't put the heading. Hey, we are doing classification of industries. Okay. Classification. Why did you sit in the last bench today? Why? I'm asking. And my friends. वो साइड में बड़ा है ना गोद में लिख तू जाओ फ्रेंड्स. Normally those what is his sister and the friend ask him to sit there. Today they have only last bench खाली है by the way. Now in fact I want you guys to come forward. Don't run behind. That's the reason I'm. ये बोलता भाई friend. कौन सा friend है ये बोला? Pen friend है. Mail friend है. Email friend है. और भी बहुत सारा types है बोलो. तुरंत ऐसे है. That all things you understand. Then ask me what is the argument. No, this studies. This is general knowledge. लिख दिया सब लोगों ने? हाँ, she is full of general knowledge. I should take some. तो break में बताना. Thanks. Updating. Guys, ये भी लिखा? Shall we go into the C1? Okay. Now C1 on the basis of ownership. Then again 1, 2 public sector industries. Because now if I ask, they will say, what is this? Huh? What is that talking going on? I can hear and identify the face. Joint sector. All our industries are you write industries. Leave one line for this. And fourth one is cooperative sector. Finally, and now you don't ask me, huh? RM and FP, where she. What is RM IBA? Really? And what is FP? Finish one. कब से? जब से चालू हुआ क्या चालू हुआ lecture? On the basis of weight of raw material used. Then finish product. This is 1. Okay. So let us have a very good explanation. Okay, copy down everyone. इधर एक बच्ची बैठी थी आपके साथ. She is this person there. उसका नाम क्या है? She is it? Yes. Okay. Now let us have everyone have copied down. Shall we discuss? Okay. Copy करो. Meantime एक काम करो. आप example लिखते जाना. एक line में जो छोड़ा ना. Those who have completed. अच्छा wait करो please. Because I need to put it in your brains first.
Okay. Right. Now look here, there are 4 classifications as per your volume textbook and on the board. Why do you think we need to classify them? Better understanding. What else? There are some very stalwarts. RN, sir, आपको कैसे मालूम नहीं? FP तो ये बता देगा. Finish material बोला तूने? हाँ, नहीं पहले material बोला. ऐसे ही confusion है सर, है ना? Then what is that word you guys tell me? So life is full of confusions. Everyone accepts? Nobody accepts. I am asking for your life. Life is full of confusion. कितना है 30-35 साल निकली है. अभी तो बस शुरुआत हुआ है confusions. Then फिर आगे जाके after 10 क्या करना है? That is the first confusion. Correct? हाँ, second confusion क्यों करना है? It's like I teach in economics ICSE what to be produced, how to be produced, and for whom to produce, why to produce. And let us put that word away from the word produce. What you guys will put into what to study. You know what to study? She knows that. Why to study? You guys tell me why to study. Get educated. शक्ल नहीं दिख रहा पर हाँ. Job है. अच्छा, job के बगैर citizen नहीं. Very good. Ideal. I understand. So we always believe there are so many industries in India, but how you and me will take up that industry? Simple. So all the industries we can categorize into these 4 groups. Abhi confusion clear? So what is the base of the first one? What is the base matlab? On what basis I am classifying? So the first basis is raw material use. Why I am saying agro-based? Or how do you define the word agro-based? Related to agriculture. Only related. The agriculture products. Okay, very good. Very simple. When they ask you 1 mark question comes in the board exam, what are agro-based industries? How do you write 1-line answer? Are those industries whose raw material is directly from agriculture? Did you get it? Come on, the whole class repeat. Class start हुआ, चले गया, खत्म यहाँ हुआ, she closed the mouth. Let us have 1, 2, 3 going on. Come on, what are agro-based industries? Thank you. I didn't get a single word. कोई नींद से बोल रहा है, क्यों सुबह मेरा गला फट रहा है? हाँ, वो बस देख रहा है. सर क्या चल रहा है? वो नहीं, पीछे वाला. So we believe if the raw material is coming from agriculture, it is agro-based. Can you give me a simple example? Sugar. Raw cotton making a cotton textile industry. Sugar cane, you say sugar industry. 2 simple examples. Is sugar cane coming from agriculture? Yes, it is. And what are we doing with sugar cane? We are manufacturing sugar. So that is agro-based. Clear? Anybody have any shadow of confusion? Now let us go into mineral based. सर जैसा आपने एग्रो बेस्ड बोला मिनरल बेस्ड भी सेम ही है, तो आप बोलने का जरूरत नहीं, मैं बताएगा. ऐसा किसने बोला? हाँ, the girl who is turning left and right. Please stand up and tell me what a mineral based industry is. Try. I use the word please. After that, what did I say? नहीं दिखे मुझे. आंसर बोल. अच्छा, what is this? गर्ल. हाँ बोलो जल्दी. Thank you. Sit down. Any other person? Last girl, please stand up. Wait, my. Raw materials are what? Very good. Sit down. Sit down. Correct, you are. Absolutely. Why you have a confusion that you are wrong? I want to say, add please. You need to get up. Early morning lazy ducks. How many actually late? Convenient. Mining is different industry, but we are talking mineral. मतलब mining से minerals मिलता है, but I cannot put mining here. समझा? Mining raw material देगा मुझे.
Now let me put it into simple line. Mineral based industries are those industries, as who told, both of them told beautifully, क्या बोला आप लोगों ने? That minerals is the raw material. Now give me any minerals. Iron. Iron and steel, what is the material? Raw iron. In fact, iron का हमारे पास 4 ore है. You know what is ores? At least you remember any one ore? Bauxite. Iron ore. Aluminium है यार. ये common sense है. Iron ore. Very good. Come on. Bauxite is my dear aluminium. Such a big blunder chemistry. Check. अरे 4 ओर में से एक ओर का तो नाम लो आयन का. Hematite, magnetite, limonite and iron pyrites. Again I'm repeating, you have to repeat. What is the first one? Second one? Magnetite. And third? Limonite nahi hai. Limonite and iron pyrites. Pyrites, not O wala pirate. P-Y-R-I-T-E-S. Sure. What did I say now? 4 ores of iron. You understand what is ores? I just forgot. What is that last person? Please get up, my dear. You lead. Just tell me the 4 ores of iron. I asked her. She's only saying. Wait, you remain standing. My dear, you stand up. What's the type? Yeah. Hey. Hematite, limonite, and iron pyrites. Forgot the second. Third one. Fourth one. Very good. At least he said 3 points. Very good. You repeat. Very good. Hematite. Wait, boy. Whoever is asked, she or he only will answer. Hematite. We'll settle. Next. Yes, wait. Repeat. Others, you repeat all the 4 ores of iron. Others. Ayushi, you tell. Yes, sir. Please tell. 4 ores of what? Iron. Acha, iron. Sir, actually, I really don't know about all this. Okay, I don't relax. have the textbook with me. Rajveer, tu bol. So I know one more. Asmeet बोलना है, बोल. Asmeet. How do I raise my hand? ये राजवीर डीपी में तो ऐसे ही दिखता है क्या? इतना अच्छा हैंडसम डीपी क्यों रखा है रे? हाँ. What kind of? Yes, my dear, you only tell. I am dependent on you. My general knowledge. Sir, can I answer? Yes, Rajveer, bol. Adarsh, you tell. Sir, hematite, limonite, siderite, and that magnetite. इधर राइट दिया है क्या टेक्स्ट बुक में? ठीक है, enough. What is her name? Come again. Oh, my dear, बोलो. She is looking at me. Hematite. Look, what kind of body language? I can mock each and every of my students, right from the way he or she walks and how she talks. Can you mock me? How do I? मैं तो देखता ही भी नहीं मेरा वीडियोस. बोलिए जल्दी बोलिए देखिए. क्या? Iron pirates. ये कौन सा नया वर्ड है? Pirates से फिर वो जॉनी डेप आएगा. Had to keep it. Sit, relax. Hey, good morning again to me. Yes, my dear, you tell it. Stand up. Morning में सोना नहीं है. Hematite, magnetite, limonite, Lemon juice. lemonade का lemonite. हाँ, she is giving the idea. Lemonade लेकर आ फिर बोलती हूँ. Iron pyrites. Iron pirates. Sit down, please. Wait, I'll tell you. No, I'll tell you. Get up. No lazy symptoms. Only one, you know. Chalo, sit down. Who can write all the 4 words on the board?
आज तो आप लोग का गुड मॉर्निंग का वेरी गुड मॉर्निंग. I'll let you wait. He is writing on his own, huh? HEA. He is writing, look out. These are basics of geography. How you guys don't know limonite, then IC, correct, and IN. PY. P capital, P capital. PYRITES. RITES. RITES. Thank you. One dependable person I have it. हाँ शाबाश शाबाश वो कौन है शाबाश वाला. हाँ दिख रहा है कौन बोला है उधर क्या लड़की से मिल रहे सब लड़के ही है पीछे. चलो who will repeat for the whole class in a very simple way. Hey, let us put online. Adarsh, you repeat all the four. Adarsh. Hematite, magnetite, limonite, and I cannot see the fourth one. Very good. It is iron pyrites. Ask me, you repeat. Yes, sir. Hematite, magnetite, lemonite, and iron pyrites. Okay. And the next person. Who is it? Ask me or Ayushi? Sorry. Hematite, lemontide, I guess she said. No, you can say it. I will correct you. Hematite, magnetite, limonite, iron pyrites. Very good. Rajveer. Yes, sir. Hematite, magnetite, lemonite, iron pyre. Everyone write this in your notebook. There is something called siderite also. Just check whether it is given in your book. हाँ ये भी add कर ले. ये actually minor है, but this is main. Siderite. है book में दिया है. Siderite. Ores of iron. Very important they are. I've seen one of my, I think, I don't know, UP students only. She is doing metallurgical chemical industries course study. You know what is metallurgical industry? Separation of metals. Very good. And it's a very prominent job. Very few people are absorbed into it. चलेगा लिख ऐसे ही बुक में लिखकर. Can we proceed? You go feel free to get up, stand, give a क्या बोलता है positive signal from your body as well. Early morning, these are the things you should do. What happened here? How was your sis? One thing I need to ask frankly, when you are asking, not asking, answering my questions, you feel a little bit uncomfortable. I feel more comfortable with me. Honking lorry, comfortable in sense. कोई वो तो खड़ा क्यों बोल देता है, आंसर क्यों बोल देता है, ये कौन? इसे तो किसी के मन में नहीं करता है ना? Feel free. I just want you to, है ना? क्या? Well, I see the energy when you guys go that break, and it's a good one. Please break with that. ऐसा कुछ मत कर दो कि सोसाइटी वाला नीचे भाग के नहीं आ जाए, है ना? So at least you are relaxing, you are क्या बोलते हैं, releasing your energy और थोड़ा सा शुद्ध हवा ले रहे. Normally, don't prefer these kind of stuff. So you can be properly ventilated, है ना? क्या हो गया? कल रात को late night concert है. क्या is really yeah finish it. Wait. Okay, I will not have any sympathy for you. Is this mineral base clear? Now let us go to the word consumer industries. What are consumer according to you? Who are consumer? You are all consumer. Even I am the consumer. So those industry which produces goods only to satisfy the needs of consumer. Shall I repeat? Those industries which satisfy the needs of the consumer.
करेक्ट? यू रिपीट व्हाट डिड आई से? स्टैंड अप ना यार, 5 रुपए का फेविक्विक दूं, खड़े रह के चिपकाऊंगा। Those industries to satisfy the needs of consumer. I'm not satisfied. That's it. Can you name any industries? That is grocery, sir. ग्रोसरी, हाँ वेरी गुड, उसने तो सब डाल दिया बास्केट में। और क्या? ठीक है, शुगर, हाँ ठीक है, शुगर। व्हाट एल्स, व्हाट एल्स? Just like, ठीक है। नहीं, मुझे किसी बोर्ड करेक्शन में मैं गया ना, पिज्जा, बर्गर और उसमें लिखा है सर फलाफल सर, बोले ये क्या होता है? सुनो सर, इट्स कॉल्ड इज फलाफल। इंडिया में है क्या पता नहीं, वो है क्या? हाँ वो ये बनाते हैं तो सर, जो भी है आपको मैं कभी बता। हाँ Mask दिया। नहीं रे, व्हाट इज दैट ब्रांड? Marks दिया क्या? अब नहीं दिया। बर्गर और पिज्जा मैं नहीं खाता, आई ईट ओनली चपातीज एंड राइस। नेक्स्ट वन, मेन रोल इंडस्ट्री। द वर्ड इज सेइंग मेन रोल। आई थिंक ये हम लोग मूवीज से पकड़ता है। जैसे मूवीज का पोस्टर लगता है, हमारा बच्चा बोलता है मेन रोल किसका है? बोला डायरेक्टर का है। वो थोड़ी दिखता है ना? देन हु इज दैट मेन रोल अकॉर्डिंग टू यू? हीरो, हीरो। देयर इज नो एक्टर बेस्ड मेन रोल। आजकल बहुत है ना, लेडीज बेस्ड, क्या बोलता है, सॉरी गर्ल बेस्ड मूवी है। क्योंकि 40 साल का बुढ़िया को मैंने लेडी बोल दिया तो शी गॉट एंग्री। मैं अभी 16 की हुई हूँ ना, देखा मिसेस हैटनरी। अच्छा अच्छा, मूवी बना है। देखो वेरी सिंपली आई से, as far as main role means, you say sir I am the main role in my family sir। मतलब कैसे? सुबह से मेरे मम्मी चालू हो जाती है ना, शाम तक मुझे मिस करती है, और पापा ऑफिस से आते पहले मुझे ढूंढता किधर है, बोले वो चूहा का जो आपने बनाया ना उसके अंदर सोफा में तो बैठा है, दिखता नहीं क्या? एंड देन पहला पूछेगा क्या पापा क्या पढ़ाई किया, जो हर रोज करता है। पापा इज फुल ऑफ एनर्जी बट यू आर वेरी क्लमजीली आंसर। फिर क्या किया? पढ़ाई किया ना। और क्या किया? पढ़ाई किया। और क्या? अभी आओ बैठो, सॉक्स निकालो, बैठो बैठ सकते हैं। एंड आफ्टर दैट, पापा आज ऑफिस में जाके आपने क्या काम किया? बोलते काम किया। क्या काम किया? काम किया। क्या काम किया? अब मालूम पड़ा ना, ऐसे ही टेंशन मुझे भी देता है। Who is the main role? The dad of the children? As a children, they are the main role. और बार बार मम्मी को अपना मेटर्निटी वार्ड याद आता है। उतना ही बोलते क्यों आई तू, क्यों आई, क्यों? मैंने किधर व्हाट्सएप डाला है ना? एंड फिर बच्चा ऐसे प्यार से बोलता है, बस एक 2 मिनट लेट होता ना, मैं बाजू करोड़पति की घर। और मुझे क्या मतलब, जो भी है आप है, बट 2 मिनट लेट हो गया पापा। नेक्स्ट टाइम दे विल नॉट से क्यों पैदा हो, है ना? फिर वो डैड का एक वो रहता है, मैंने देखा है, तू मेरा बेटा हो नहीं सकता। बट बेटा अपना फिर से बोलो, तू मेरा बेटा हो नहीं सकता। हाँ, सोसाइटी में आजकल यही बात चल रही है। क्या आप जो बोलते हो वही चलता रहता है। क्यों? क्योंकि मेरे और आप में बहुत डिफरेंस है। तो व्हाट इज द डिफरेंस यू फील? यू टेल मी। सब कुछ मैं क्या मोनो एक्टिंग करूं क्या? आप बोलो। किसी ने मुझे बोला सर जनरेशन गैप है। Yesterday only I was lecturing in Vashi. One new student joined our lecture. She was frustrated right from the one. What is that frustrated? When I came to know that I taught her brother both 9th and 10th, she was more frustrated. So to Sara details ma. And she was saying, sir, my dad and me na sir generation gap है। तो मैंने बोला एक बता, 1 मिनट में उसको सॉल्व कर सकते हैं। पर पक्का कैसे सर? आपका पापा सिर्फ आपसे 2 साल का उम्र में बड़ा लगना चाहिए। कुछ भी बोल। Understood? She might be 13 or 14. If the dad is only 16, do you think there will be any gap in between? सर 2 साल में क्या गैप? सर वो भाई हो सकता है सर। हाँ वही वही देखा, उसको देखा बायोलॉजिकल डाउट कहाँ से कहाँ घुस रहा है। तो definitely when your mother and father were born and brought up, the setup was different. Now you are born and brought up, the setup is different. Correct? So what will be there? जो आप लोग बार बार बोलते रहता है, जनरेशन गैप रहता है। तो who is the main role now? Dad or children? Children are the main role. तो आप लोग हमेशा भी ऐसा टैग लगा के घूमने को, अरे अलकेश ने बोला
फिर घर पे जाके दो धुलाई होता है, नहीं सर मेन रोल नहीं सर, साइड रोल है, विलन का रोल दिया है. It's like our Hindi cinemas are the best, I feel. The hero gets, I think, 10 bullets, but he has a 15 minutes dialogue to be told. मतलब हर जगह बुलेट लगा है, but डायरेक्टर बोले जब तक पूरा डायलॉग ना बोलेगा तो पैसे नहीं दूंगा. Whereas in English movies ना, they just come, I don't know what they are speaking, only एक बुलेट का साउंड आता है, दोनों गिर जाते. उन्हें क्या हो गया, मर गया. अरे कितना कम बात करता है ना, और हमारे हिंदी में तो पता नहीं बस डायलॉग बाजी चालू ही रहती. तो उसमें मेन रोल मुझे समझ में नहीं आता कौन है, या तो माँ है या तो बेटा है. माँ अपना लेवल का डायलॉग छोड़ती रहती, ओए मैं तुझे पैदा किया, फिर 10 महीना, अरे यार तू अकेली थोड़ी रखा, फिर मैंने तुझे क्या नहीं किया, वो तेरा रोल था, और तू मेरा कुछ नहीं बात सुनता है, ये मेरा रोल है. एंड आगे जाके कुछ नहीं करने वाला, ये भी मेरा ही रोल है. व्हाट इज दैट रोल? मेन रोल. अच्छा सर ने इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया. गिव मी एनी एग्जांपल ऑफ मेन रोल इंडस्ट्रीज जिसके बगैर हम नहीं है. तो पहला लड़का बोला पापा द ग्रेट इंडस्ट्री. पापा है ना, है ना पापा ग्रेट मेन रोल इंडस्ट्री. मम्मी कंज्यूमर इंडस्ट्री. बोले क्यों? खाना बना के देती है, चुप रहो. So what is main role means? I say iron and steel. Is it main role? Yes. Without iron and steel, can we think of any industries? No. How about cement? Can I put it into main role? Yes. Yes. No. Wait. Rajveer, is cement is a main role industry? Sir, it can be. It can be. Very good, positive. Ayushi? Yes, sir. No. Why, man? Yes, yes. You said no. I said yes, sir. अच्छा वो कम्युनिकेशन जरा प्रॉब्लम है, आप नो बोलेगा तो उधर यस सुनता है. हाँ बट आसमी यार ऑनलाइन से आंसर निकलना. एटलीस्ट यू अंडरस्टूड. चलो लेट अस राइट इन द गैप. एग्रो बेस का गैप में एक सेंटेंस लिखो, मिनरल बेस. एंड अगर आपने जगह नहीं छोड़ा है, लाइक ही हैज नॉट लेफ्ट द स्पेस ना, तो ओनली राइट द एग्जांपल हियर. इधर लिखो कॉटन टेक्सटाइल एंड शुगर इंडस्ट्री. मिनरल बेस में लिखो आयरन एंड स्टील and aluminum. You are saying consumer में लिखो अमूल. अमूल is Anand Milk Union Limited. You write milk industry. Then main role में लिखना iron and steel. पहले वो लिखो, example लिखो. फिर if you have not left the space, come below, write like this. In exam they ask you A लिखो और 1 लिखना, और उसका मैं meaning दे रहा हूँ. 2. चलो write down for A. Agro base shall I give? Right up. Agro based directly production. Raw materials. What is that? Yes. Right down. Right up. Are those industries? Agro-based I'm giving. Online is please write. Are those industries whose raw materials directly from agriculture? अरे लिखो ना भाई, दोनों एक दूसरे के चेहरे से इतना क्या लगाव है. नहीं बिहाइंड शी इज डाउटिंग हरसेल्फ टू. लिख लिया? क्या लिखा जरा पढ़ो. फ्रॉम एग्रीकल्चर. दोज एवर इंडस्ट्रीज. रुको ना, उसी को बोल रहे हो. हाँ वेरी गुड. आपका तो इंग्लिश मेड से भी फाड़ू है. बाजू वाली ने क्या लिखा? शी इज माय फॉलोअर. यू डोंट नो. सेकंड वन मिनरल बेस लिखो. इंडस्ट्रीज अभी थोड़ा इसमें ऑल्टरेशन करता हूं. विच आर प्योरली बेस्ड ऑन. क्या भाई साहब लिखने के लिए क्या लेगा? कोई क्या हो गया? लिख दीजिए. कब लिखा है? मिनरल्स नहीं इंडस्ट्रीज से purely based on mining of minerals. Thank you. He gave me a new word. Mining of various minerals. Mining of various minerals.
Example तो already लिखा है ना? Yes, sir. Iron and steel. If bauxite I said for aluminium. Everybody knows? Yes, sir. Okay. Third one. What is that? Consumer industries. अभी थोड़ा इसमें भी कुछ alteration करते हैं. Industries which satisfies various needs of different consumers. Industries which satisfies various needs of different consumers. You write milk, bread, whatever you want to write. But vulgar is like डाल सकते हैं, but कुछ लोग बात करते हैं. क्या अभिमान अंकल है? मेरे से बोलो नहीं. हाँ, you told her, don't you can. चलो. मैं कर दी. Then order is something. हाँ, कॉटन कहाँ से कंज्यूमर इंडस्ट्री? कॉटन क्लॉथ या गारमेंट? हाँ, गारमेंट इंडस्ट्री. That is correct. Then the fourth one. Who will tell me the definition or a meaning for this? कैसे लिखेंगे मेरे को? Main road. हाँ. What? Main road is called as main road. Very good, yeah. Somebody from online, just 1 minute. Who was saying online? Definition of what? Main role, main role. Okay. Main role, I guess it's like the people who supply products or How do raw I say? materials to produce other goods. I supply only the knowledge. Thank you, Ayushi. हाँ. Industries which supply raw material. अच्छा, ये उधर दिया है लगता है. ये बताते हैं. हाँ यार, कहाँ दिया है ये? Volume. अच्छा, Ayushi, it is given in the volume, is it? चलो I ठीक don't है. have the volume. अच्छा ठीक है, लिखो. I'm giving main role. Only such industries supplying essential. I hope now the word is clear, है ना? Bracket में डाल दो main. Main. Go आगे. Bracket के अंदर. Elements or FP. Finished products. Talented girls. Hey, there was a one MTV community called Spice Girls. Have you heard of her? Who was it? Singers. There. Yeah, bags and all that. So I'll ask her to make one small band here, है ना? You only select them. The end of the time before we have a farewell. Who? Not anymore. यार कुछ काम तो अकेले करो. अच्छा ठीक है, हम बाद में बात करें. अभी समझ में आया what is main role? Let us go in the second one. Directly write the second one. I'm giving small scale investment limit. Small scale I'm giving. अच्छा तुम तो ना मतलब. नहीं, you seem very good. I heard it because they said it. You're so small scale industries with an initial investment of 50 L. What is L there? Lakhs. और कुछ मत सोचो. Initial investment है उसने सोच भी लिया. अरे हम saying सोचा नहीं. Lakhs. अच्छा उसके पास तो ऐसे ही बढ़ते हैं. 50 lakhs investment of initial investment of 50 lakhs and above. So example, anybody? वो cooperative में घुसे. You write fireworks. You know what are fireworks? Yeah. नहीं अभी टाइम है. There is a place in Chennai called Sivakashi Standard Fireworks Company. Correct? Actually matchbox भी आता है. फिर वो थोड़ा सा वो सब नहीं लिखते हैं. Only fireworks.
समझ गया ये क्या होता है? अगरबत्ती। अच्छा, लार्ज स्केल लिखना। अच्छा, लॉलीपॉप को ऐसा नहीं पकड़ता भाई, इतना भी ये नहीं। चलो, लार्ज स्केल लिखना। आर दोस इंडस्ट्रीज। मेरे लेक्चर में एक मैंने देखा है ना, बच्चे सब मुस्कुराते रहते हैं, सर ना कुछ भी एग्जाम्पल बोलते हैं, समझ जाते हो ना, सर को भी पहले सिग्नल मिल जाता है ना? क्या समझा? अरे लार्ज स्केल लिखना, क्या समझा? आर दोस इंडस्ट्रीज whose initial investment is from 50 lakhs to 1 crore and above. देखो मेरा एक बच्चा सब ढूंढ रहा है, सर बराबर रट्टा मार के आया कि नहीं? गुड बॉय। 50 lakhs to 1 crore and above, मतलब 1 करोड़ मिनिमम होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट फ्रॉम 1 crore and above लिखो, 50 lakhs हटा दो चलो। She is getting confused. Only cut one. Next one. Example. हाँ, example लिखो। Iron and steel. आप बोर हो क्या रहेगा ना? एक काम करो। You write GM industry. You know what is GM? German. हाँ, very good. German motors है। हाँ। HM कौन सा motors? Hindustan. और PM कौन सा motors? PM कोई है ही नहीं, अभी मैं खोल रहा हूँ। AM. मेरा नाम ही AM. जरूर ना। देखो उनको याद, क्या क्या सेकंड वर्ड बोलो, क्या है? बहुत मार खाएगा, ये मेरा नानी ने रखा। अच्छा, एम इंडस्ट्री सर तो ये दिखाता है। किधर दिखाता है? अच्छा, एक कल मेरा एक 12th का स्टूडेंट क्या बोला, सर आपका ना एक व्हाइट कलर शर्ट पहने हुए एक डेमो लेक्चर चलता है सर, हमेशा उसको देखते रखो। वो शूट किया वीडियो आई थिंक 3 साल पहले की बात, 3 नहीं आई थिंक उसके भी पहले, नहीं सर अभी डाल के रखा है। Next to maths and science, your lecture also flashes. Anybody have seen that? No, you have seen. Now, earlier, before to this UT, I was working there, one of the university. They come from Rajasthan. उनका उधर ही head office. तो हर एक रूम में जाएंगे, उधर तो 24 क्लासरूम्स। तो आई बीइंग द कोऑर्डिनेटर जरा मैं जाके देखता हूँ भाई शूटिंग वूटिंग बराबर हो रहा है कि नहीं। तो एक जगह पर एक लेडी टीचर थी, शी वाज अनेबल टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। कैमरामैन क्या करता है, ऐसा बड़ा क्लासरूम है, हाँ यस मैडम चालू, रुको मैडम, फिर से चालू। मैडम ने थोड़ा सा अच्छे से करके आया था लगता है, एंड बार बार ये रोक रहा था ना, शी गॉट टेंस, नहीं करेंगे मुझे जाओ। तो फिर वो आया, सर वो आपका वो अकाउंट्स का टीचर है ना, ठीक से डबिंग नहीं कर रहा, मैंने तो मैं आप आ जाओ सर, चलेंगे सर। आई डिडंट वेयर द यूनिफॉर्म आल्सो, सर हमको यूनिफॉर्म लगता है। तो सर आप जो बोलने का बोलो सर, मैं रिकॉर्ड करें। तो आई डिडंट से एनीथिंग एट ऑल, I just walked. There are 4 rows, na, and I walked towards the camera and little bit behind. जैसे मैं आप लोगों के साथ करता रहता हूँ। Perfect sir, perfect. मतलब क्या perfect? There the more है. And that was also released, not here in some. So why I'm saying that whenever we are talking about some examples, now you should give quickly. PM क्या है? But उन्होंने कार्ड स्टार्ट किया है। You know, there was a prime minister in India called Lal Bahadur Shastri. Yes, sir. The most, हाँ, क्या बोलते हैं, most ईमानदार person in India. There was a motor company called Fiat. अभी भी है। अभी तो छोड़ी चले। हाँ, he was offered one small Fiat Premier Padmani. पुराना टाइप का टैक्सी है ना? When he was a prime minister, he was so ईमानदार, उसने बोला सर मेरे पास वो कार खरीदने के लिए पैसे नहीं। उनकी 2 लड़कियां थी, दोनों लड़कियां दिल्ली में स्कूल्स जाती थी, तो प्राइवेट बस से नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाती थी। So although even after his death, वो जो सेल्समैन आया था ना, उसने वो कार उनका दरवाजे पे छोड़ के चले गए, मतलब जब आपको पैसे लगे मुझे दे दे। तो even after his death, that the car was there in his doorstep, है ना? So that kind of quality prime minister we had, and what has happened to him? There was an agreement in the Russian area called Tashkent. We do not know what has happened. And India-Pakistan war only. Russia has invited Prime Minister of both India and Pakistan to sign agreement there. Agreement sign हुआ, he went back to his hotel, not a hotel, a private something, where his own the cook was missing there. Ibrahim Khan, he was the other person who gave him a last glass of milk. Why it was the last glass of milk? After that he didn't get up at all.
but Indira Gandhi ordered not to do the post-mortem of the body. After there are some theories है. आप कभी ये ताशकंद फाइल्स करके मूवी ओटीटी पे मिलेगा ना, प्लीज वॉच दैट मूवी. ऐसी कोई यंग लड़की दिखती है उस मूवी में. आई थिंक शी इज बंगाली आल्सो, द एक्ट्रेस. एंड शी ओनली फाइंड्स आउट द, क्या बोलते हैं, व्हाट हैज हैपेंड टू आवर प्राइम मिनिस्टर. You know the slogan called Jai Jawan, Jai Kisan? Who raised the slogan? Very short fellow. Hardly, my dad being a central government employee, वो बोलते थे जब भी प्राइम मिनिस्टर बनता है ना, मुंबई आएगा तो पहला बीआरसी में आना पड़ेगा. My dad told even he saw this Indira Nehru before the marriage of Indira Gandhi. मतलब Indira Gandhi बनने से पहले. Very thin girl, and Nehru ji used to keep this Indira almost everywhere. जहाँ भी वो meetings में जाते थे, मतलब she was well trained by Indira, her dad. That is why she was a lady of iron fist. इसे पॉलिटिक्स बताऊं कि आगे बढ़ जाऊं? आगे बढ़ जाओ, लेट हो जाएगा. चलिए किसका लास्ट के, हाँ बताए ना. आयरन स्टील लिखो, ऑटोमोबाइल्स लिखो, आयरन स्टील ऑटोमोबाइल्स, और क्या, हेवी इंजीनियरिंग लिखो. हेवी इंजीनियरिंग में शायद आपका टेक्स्ट बुक में रहेगा भी. दिस इज द वन. बेल भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड. अच्छा उधर है, फिर मत लिखो, मत लिखो. नैल्को बैल्को दिया है क्या? नहीं दिया है तो बैल्को लिखो, बैल्को, क्योंकि तूने ही बोला था ना एल्यूमिनियम. एग्जाम्पल, यू वांट सम डिफरेंट ना. भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, बैल्को. नैल्को इज नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी. वरना ये भी नहीं लिखना तो ये लिखो, सिंपल है. जेएसडब्ल्यू लिखो. व्हाट इज जेएसडब्ल्यू? जिंदल. आगे तो बोल. जिंदल स्टील वर्क्स. हाँ, जिंदाल स्टील वर्क्स. ठीक है, जिंदल जिंदल. तेरा दोस्त है क्या? भाई करोड़पति है. I'll show you the videos of Lakshmi Narayan Mittal. I was showing them how rich he is with this company. That's number one steel producer in the world. Chalo, let us write the ownership. Right for public sector. Those industries purely located in government sector. Purely in government sector. Shortly. Industries purely in government sector. So public. कोई देना. Public मतलब भी government sector ही है. Example, you write IR. What is IR? Indian Railways and defense. IR and defense. Public sector है ना. Then private sector. What will you write for private sector? Owned and managed. Owned, OWN. And managed by, yeah, put your head on this. Private entrepreneur. When I get the pronunciation wrong, sir. Who is an entrepreneur? Investor. Here it is. This is the spelling, huh? Entrepreneurs. Example, you write Reliance, RIL, and Tata. Joint sector. I'll go a little bit faster. It's not time making. Right now, joint sector. Owned and managed. Owned and managed by public and private. दोनों मिला के चलाते हैं. एक्चुअली ओनर गवर्नमेंट रहता है, चलाने वाला प्राइवेट रहता है. जो एग्जांपल आपको वॉल्यूम में दिया, ऑयल करके दिया है, ऑयल इंडस्ट्रीज लिमिटेड. फनी एग्जांपल है, ऑयल इंडस्ट्रीज लिमिटेड. फिर लिखना कोऑपरेटिव्स, कलेक्टिव ओनरशिप, सेलेक्टिव ओनरशिप. Put a dash. Both investment and profits. Both and profits.
both investment and profit. Example is best is Amul. Anand Milk Union Limited. Ceremony is non-profitable. तो कच्ची हो गई है, सुपर फ्री में ले जाके मतलब दही सब लेकर आए हैं। तो वो started as a cooperative. इंडिया का biggest cooperative वही है। क्या आप लोगों को अन्नपूर्णा महिला मंडल सुना है? यूनो सेक्टर 26 इन वाशी एरिया कोपड़ी करके एक गाँव होता है। अन्नपूर्णा महिला मंडल उधर ही चलता है। पापड़ बनाता है, पिकल्स बनाता है। And I met one or two of the ladies because I was doing a project from my college work. And ये वो ladies है जो generally thwarted from the family. किसी का husband नहीं है या किसी और lady का लड़के ने उसको छोड़ दिया है, तो ये उन्हीं ladies को लेके उनके लिए पूरा मतलब setup है, but वो industry है। क्या होता है किसी naturals are they cooperatives? Private है. Naturals is not a cooperative man. Who told you? No, it is a private way. In fact, it is an MNC type. It is not an MNC. Consumer है, but they are asking whether it is cooperative. Cooperative, ये देखो, cooperative का मतलब Indian startup. No, I don't think so. Hey, look here. If I say Amul, he is asking NGO. NGO नहीं है. It started with 24 dairy farmers in Gujarat. And the place also I know. I haven't gone there. It is this small village. They were selling milk to the middlemen who were coming from Mumbai to purchase the milk. They were taking 1 rupee per liter. They were selling that same milk in Mumbai 20 rupees per liter. When the dairy farmers, these people came to know, they said this is high level of injustice. हमसे 1 रुपया 50 पैसा में ले रहा है और उधर जाके 20 रुपये में बेच रहा है. So they started a milk van. You know what is milk van? Refrigerator van. And they only collected the milk and one person used to come to Mumbai to sell it off. ये पूरा story हमको बताया गया है. That is what I am telling you. So they got 7 rupees per liter Mumbai में आके. मतलब फिर भी 6 रुपए extra मिल रहा है. Then they started slowly and slowly. They know. फिर उन लोग ने अमूल का फैक्ट्री उधर ही लगा दिया. तो गुजरात में अगर आप जाके अमूल देखेंगे ना, biggest, you know, today it is Asia's #1 milk and milk product. जबकि स्टार्ट हुआ था बहुत छोटा, उसलिए आप लोग को मैं हमेशा बोलता हूँ, a small idea can become the biggest. Did I tell about Swiggy? 3 boys on a, I think IIT Bangalore somewhere. They were staying in a hostel. And जब भी बेचारा खाना खाने आने का उनको 5-6 किलोमीटर रात में आके खा के फिर जाना. फिर वो एक इंजीनियर ने बोला यार ऐसा कुछ आइडिया करते हैं. बोले क्या? We'll make an app ना, जिससे घर बैठे बैठे हम लोग मोबाइल से ऑर्डर करेगा. And that will connect to the restaurants which are in and around 5 to 10 kilometers. मैं बोला वाह नया आइडिया यार, क्योंकि हमको तो जाना नहीं पड़ेगा. This is how the Swiggy platform came. अभी you know today Swiggy कितना कमाता है. So this is what I always feel, that you should be an entrepreneur. What is an entrepreneur? Oh, sorry, who is an entrepreneur? The person who is having new ideas. और मुंबई में बोलता ना जो नया आइडिया है वही बिकता है. अगर आपके पास आइडिया है, you are going to share the market. You go to rule the market. मेरा तो वही फंडा है. मैं भी आइडियाज कुछ ना कुछ करता रहता हूँ और कर भी रहा हूँ. Besides teaching, I always say teaching is my part-time job. But करता हूँ 9 घंटा 10 घंटा या कभी-कभी 11 घंटा भी करता हूँ. But do some other work. So that is what the word cooperative. अभी आपके कोई 5 अच्छा friends है. जैसे I forget her name. What's her name? She has a good little bit of collective work, but वो थोड़ा सा मजाक मस्ती में घुस जाते हैं तो सब भूल जाते हैं. She has to, you know, master the resource. अभी he seem to be a good leader. अरे यार ये काम करते हैं, चल हम लोग बैठते हैं कुछ काम करते हैं. तो जो आपके बॉयज का जो रिक्वायरमेंट है, आपने उसके ऊपर एक छोटा सा एक ग्रुप बना दिया, व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया. तो एक लड़का जिसको जरूरत है वो व्हाट्सएप में डाल देता है, और दूसरा लड़का क्या करे, उस डिमांड को सीधा उधर रिटेलर से कनेक्ट करता है और रिटेलर को बोलता है मैं दिन में 10 ऑर्डर दूंगा तुझे, वेरी गुड, और हर ऑर्डर के पीछे मेरा 100 रुपया कमीशन रहेगा. या आपके फ्रेंड्स को मत बोलो. Then every time your friend is demanding in that group, you connect to the retailer. Retailer उसको directly घर पे पहुंचा दे. It's my idea for you guys. Understood what I'm saying?
So that is how these cooperatives are working very efficiently. What about you and me doing? कुछ नहीं सर, वो लेकर नोट्स लिखो सर, प्रैक्टिस करो सर, फिर जाओ सर, ये यूट्यूब फिर स्कूल. अरे छोड़ो यार, ये तो लाइफ है. लाइफ इज वेरी बिग. हमको क्या दिखता है लाइफ में? ओनली फ्रेंड्स. मम्मी पापा फ्रेंड्स के सामने दो ऐसा हो क्या, वो भाला लेके खड़ा रहता है, इधर नहीं जाने का, उधर नहीं जाने का, ऐसा बात नहीं करने का. क्यों नहीं करने का? वी आर डूइंग स्मॉल बिजनेस, है ना? वी आर डूइंग स्मॉल व्हाट, which is the word somewhere I was explaining, cooperatives. There's a book in economics generally which I tell my BML students to read called as Rich Dad and Poor Dad. You might have heard also. हाँ, वो तो बहुत बोरिंग है सर, पूरा इकोनॉमिक्स भी पढ़ा है इसमें. रैट रेस बोलता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलता है, सेकंड क्वाड्रेंट बोलता है. एंड वो बुक में ना, द ओनर आई मेट हिम, ओनर मतलब द पब्लिशर रॉबर्ट टी कियोसाकी, मेट हिम ऑल द वे इन सिंगापुर. मैं मिलने नहीं गया, मैं उधर काम कर रहा था. ये भाई अमेरिका से होते हुए, ही इज एन अमेरिकन, राइट, चाइनीज बंदा. तो ही वाज सेइंग हाउ ही रोट दैट बुक, हाउ टुडे इज अ मिलियनेयर. उसमें रिच डैड होता है बिजनेसमैन, पुअर डैड होता है टीचर, बिल्कुल हमारे तरह. Sir, the story is about हाँ, 2 9-year-old. हाँ, his father. his father is threatening because of Correct. factory owner. देखो इसको याद भी है. His father, Is a teacher. his own father was a teacher and he was struggling with finances but always. Very good, very good. वो कैसा गवर्नमेंट का पॉलिसी यूज करता है? जो पुराना घर है उसको खरीदता है, जो लॉस में जाता है उसको खरीदता है, फिर 1 साल के बाद उसको 3 गुना प्रॉफिट में बेचता है. देखो, she knows. अगर आप नहीं समझ में तो कभी मुझे फ्री टाइम में पूछना, I'll tell you. Being in economics for such a long time, I can teach you something called as financial independence. What is that financial independence? आप नेक्स्ट टाइम पॉकेट मनी देना है, लेना नहीं. किसको देंगे? पापा को. अभी she was raising one eyebrow. हाँ, दे सकते हैं, क्यों नहीं? पापा को 1000 रुपये चाहिए, दोने का नहीं, चल बेच सकती है. टेंशन ना लो, लेकिन कल आते 2000 दे दो. So this is how we make our students to understand economics. Okay, चलो. Let us write the last one. ये heavy industry के आगे लिखो, both raw materials and finished products. Both raw materials and finished products are heavy. Both raw materials and finished products are heavy and bulky. एग्जाम्पल लिखना, सीमेंट इंडस्ट्री. उसका रॉ मटेरियल क्या है? यू राइट, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन एंड जिप्सम. सैंडस्टोन, लाइमस्टोन. माय डियर, व्हाई डोंट यू डू वन थिंग? मूव आउट, फ्रेशन अप, थोड़ा सा. हाँ, सेकेंड लेक्चर में तो थोड़ा एक्टिव रहो. व्हाट वाज दैट? आई टॉक टू योर मदर वंस व्हेन शी कम्स. Next one, light industry. Both raw materials and finished products. Both raw materials and finished products. हाँ, क्या लिखना है? In nature. Example. Put a hyphen. हाँ. Light in nature. Raw cotton. Is cotton very heavy? तो आप लोग 1000 kg का कॉटन उठा सकता है? कॉटन ही तो है. Put a dash. You write textile industry. नहीं, एक लड़का बोला आप बेकरा की दोगा तो ना उठाएगा, है ना? Smile on good से. Cotton textile. चलो 2 minutes relax. वैसे भी पूरा सब रिलैक्स ही कर रहा उधर पीछे. Read for all industries and tell me any query. Sir, you didn't give Investment वाला. the definition of cooperative. ठीक है, अभी रीड कर लो ऐसे. Investment and दिया ना कलेक्टिव ओनरशिप. collective ownership, investment and profit. Why you sitting here? Tell me. अच्छा, कुछ नहीं है. अच्छा, आराम से. वो कैसे होगी? तो घर से नहीं. Right? Okay. They
Any industry doubt? Ayushi, Asmi, Adarsh, No, Rajiv? sir. Absolutely. No, sir. No, sir. Please read it and let me know. Read it. Sleeping cats. I should take a pic of you and send it in the WhatsApp of to your mom. How energetically this girl look. In the break. बच्ची है कुछ भी है हाँ what is it what is it what is it Yes, ये डॉक्टर आके टेम्परेचर चेक करो हाँ तो लेटर सी कितने सिंपैथेटिक और कुछ करो भाई तो जा मम्मी बोल रही आदमी से मम्मी बनती इसकी मम्मी है उसकी दादी है Hey guys, come on, read. I'm not wasting my time. Sister, oh my god. कब से पापा का दूसरा अच्छा cousin. चलो, come to page number. We'll move with the classification Avena. ये chapter थोड़ा lengthy है, but we can finish it. वो नहीं लिखा हम लोगों ने. ठीक है. यार अभी देखो मुकेश he doesn't manage any उधर बोलना उसका पूरा एक टीम रहती है जो काम करता है but ultimately Reliance belongs to who somebody from हो सकता है ना ट्रस्टी है जीएम है कोऑपरेटिव कैसे है कोऑपरेटिव मतलब जो नहीं ना कोऑपरेटिव मतलब अभी फार्मर्स लोग हैं आई कैन नॉट कॉल रिलायंस टू कोऑपरेटिव फाइनल से क्या है अभी फाइनल से कोऑपरेटिव से सब लोग मिलके डिसीजन ले अभी रिलायंस में क्या सबको मिलके पूछेगा नहीं फाइनल अथॉरिटी थी उन्हें समझा Hey, write down what is that he was asking? Explain. Hey, if you're not feeling well, you go home or check. You go to work out. No, only in the breaks. What did I say? Briefly explain the interdependence of. It is there in the volume. Very good. Interdependence of agriculture and industries. लिखा है तो देख लो I don't know. 148 everyone page number 148 of your volume. It briefly explains the interdependence of agriculture and industry. Now before I give or you take the answer, anybody tell me is agriculture industry dependent? Yes. How? Like said dependent on raw material like simple बोलो ना with industry they are all agro based रहेगा तो dependent नहीं रहेगा can I say iron and steel dependent on agriculture no sure हाँ तो you say all agro based industries are dependent on agriculture चलो it is there in page number 148 you only pick up the answer minimum 4 points you have to write agro based industries. All the onliners, please pick up the volume to 148. Any four. बाद में मैं दे दूँगा. Introduction मैं दे दूँगा. 148 में है. Straight answer it is it. Explain the interdependence of agriculture and industries. पूरा मत copy करो. Write on your own. Create some interesting answers now.
She wants to go. Then eager. What is that? Get for agent. She is strongly sitting. ये लोग ही उसको बीमार कर रहे हैं. वो नहीं है स्वर्ण. Peace. आफ्टर ना अभी तो स्टार्ट हुआ है ना. आप लोग इतना टेंशन है करियर के ऊपर. दिशा के अलावा आप ही अलग पढ़ा ये कुछ रही है वो कुछ बोल रही है. लिखो. तो अपना करियर को लेके इतना बोल रहा है कि टाइम के लिए की जरूरी क्या पूछ रहे थे कुछ इवेंट करके स्टूडेंट है हम बोल क्या पूछ क्या साइंस नहीं समझ में. outside में online में forms science बोला business and I teach this also. I taught 2 London days course. Now we are going to physics. Already मतलब मेरा कोर्स मतलब फैमिली इकोनॉमिक का जवाब में जाकर जिसको कुछ नहीं आता वो आप करता. क्योंकि मेरे खुद में एक बॉलर था मन मेरे से जूनियर. मैं सेकंड ईयर में था वो फर्स्ट ईयर पहला अरे कोर्स कैसा है अच्छा है. तो फिर कोर्स कैसा है अच्छा है. जो मतलब तुझे पहली बार क्या मतलब ना ऑलराउंडर है मैं क्या कोच हो जाती. तो हमारा कोच सुबह सुबह नेट में जाएंगे ना थोड़ा सा क्रिकेट खेलता था तो पास में जाकर क्रिकेट में जाएगा. और फिर पहले ए तुम लोग कौन है मैं बोलेगा बॉलर चलो आइए और बाकी बैट्समैन चलो तो बीच में क्या असल तो सही उसका कंपटीशन है बीच में भाई नाम दे हां बीच तो बड़ा बंदा है उसका बेसिकली डायरेक्ट कनेक्शन था जहां भी गए क्रिकेट के लिए अरे भी अच्छा बोल रहा है बहुत सारा काम इतना आलसी था ना हम लोग बहुत खाली से चेयर में बैठा था. हाँ फिर तुम कह सर हम लोग विकेट कीपर आज चलो सर ये लड़का ऐसे ही खड़ा किधर भी नहीं क्या हुआ तुझे सर मैं ऑलराउंडर है तू जानने फिर से बोल ऑलराउंडर एक काम कर जापानी लिखा क्या सर मैं लिख रहा अच्छा हो गया जा वो पिच में मिट्टी पड़ा है उसको साफ कर क्या सर साफ करके आ सर पहले दिन साफ करके आ फिर जा वो ड्रेसिंग रूम में मेरा वो बॉलर का क्या वो लिख रहा
वॉलेट रखा है लिखा है अभी बोल क्या करता है नहीं सर मैं कुछ नहीं कर सकता तो हम लोग इतना हंसा भाई बॉलिंग वो कौन ना एक बंगाल बॉलर था देवाशीष मोहंती का इंडिया के लिए खेलता था एंड वैसा कवर की तरह ऐसे उस पर डालता था ये भाई साहब उसका मॉडल था एक दिन स्लिप होती गिर गया पिच में गिर गया एंड उसका आर्म है ना ऐसे कुछ बेंड करता है मुझे सब पता है कि लिख पा रहा है हमारा कोच इधर आ, क्या हुआ इसको सर वो गिर गया तो उसका आर्म करा हाँ वो अनफिट है वैसे भी ऑलराउंडर लेकिन कुछ बोला था और एक माँ मेरे क्योंकि उसका ये हमारा नहीं ऐसे नीचे गिर गया so that is why I say I'm just learning दिखता है आपको ऐसे लोग बहुत कुछ नहीं इसमें पढ़ा आपको इंटरेस्ट है कैसे ये आप भी मेरी तरह आपसे लोग हो ना मम्मी इतना सुंदर में कर इस मम्मी को बोलने का नहीं चाय करके आप दूध दे दे ए आप जाओ जाओ वैष्णव की गिविंग प्लीज आन मतलब देखो मैं बस क्या नहीं ऐसा कुछ नहीं उसी लिए दूर रहता हूँ मैं hey guys everyone has completed जाओ उधर चार खोला है और स्टॉप कर तो यार वो सब relax relax hey everyone have completed shall we proceed anyone want any introduction or conclusion point feel very tense to the note you madam okay hey I am reading no need huh? Agro based agro based industries depends on agriculture for their basic raw materials देखो कितना कुछ ऐड कर सकते हैं okay agro industries makes an efficient use of and makes efficient use of their several purposes hey guys shall we proceed to the next online as I've written चलो next heading अभी हमारा मेन इंडस्ट्री स्टार्ट होता है बट उसके पहले एक छोटा क्वेश्चन है राइट डाउन दैट आई विल गिव यू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट दीज टू गाइज वर काउंटिंग अप एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ localization of industries where is that mistake explain the concept of localization of industries or what are localization ये एग्जाम में पूछते हैं just understand this automatically localization of industries who is the next person in the row go हाँ ये बच्चे हैं ना कुछ भी control भाई साहब control what is the meaning of the word localization I said in Koperkena one new industry has come up the first thing you will ask you why है ना हम लोग why पूछने में बहुत बिजी रहते हैं हर चीज में why फिर then I say how or for what reason फर्स्ट आप बोलते हैं सर जो रॉ मटेरियल है ना सर वो खोपरकेना में ही मिलता है उसी लिए वो इंडस्ट्री उधर है लेबर्स है ना सर बस उसे 2 किलोमीटर दूर है and the water required also very nearby so indirectly I'm explaining what factors which helping that industry to locate in that area समझ में आया any factory coming in Mumbai और मेट्रोपॉलिटन है ना ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है इलेक्ट्रिसिटी 24/7 सर लेट अस पुट इट इनटू सातारा समवेयर डीप इन महाराष्ट्र नहीं सर उधर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम है रॉ मटेरियल तो 4 दिन के बाद पहुंचता है तो इनडायरेक्टली देयर आर सम प्रॉब्लम्स और हिंड्रेंसेस इन द लोकेशन ऑफ दैट industries so any industries are set up like
अगर आप लोग अभी फिल्मी दुनिया से बहुत जुड़े हैं तो ऐसे बॉम्बे का बॉलीवुड है ना, एंड कैलिफोर्निया का हॉलीवुड। चलो बॉम्बे का बात कर सकते हैं, कैलिफोर्निया हम गए नहीं तो नहीं बात करेंगे। वाई बॉलीवुड? सर सलमान इधर है, शाहरुख इधर है, अमिताभ इधर है, सब इधर है ना। एंड जो भी इन्वेस्टर्स है या जो भी फाइनेंसर है इधर ही है सर। और बहुत सारा स्टूडियोज है, आप कभी फेमस स्टूडियोज जाइए, जो मैं लास्ट वीक गया था, स्टूडियोज नहीं गया था, कुछ एम्बेसी में गया था। और भी स्टूडियोज है, आर के स्टूडियो जो चेंबूर में है, एंड डबिंग सेंटर जितना भी है, प्लीज डबिंग सेंटर जितना भी है वो मुंबई में ही है। So don't you think I'm explaining what location of an industry? समझ में आया? तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? Factors of Localization. once again factors of Localization. write down the answer. I'm giving the meaning. What is localization means? These are set of factors. Localization. These are set of factors primarily responsible for location of any given industry. Location of any given industry in a specific region. In a specific region. Example, iron and steel. Iron and steel. Iron and steel. Example easy है. वो भी है. In and around छोटा नागपुर प्लाट्यू, क्योंकि सबसे ज्यादा मिनरल्स वहां मिलता है. In and around छोटा नागपुर प्लाट्यू, bracket you can write Jharkhand. In and around छोटा नागपुर प्लाट्यू, ब्रैकेट में क्या लिखना है? ब्रैकेट मत लिखो, झारखंड लिखा ना, उसके आगे लिखो plenty of minerals, laborers, transport, electricity, etc. ये सब उधर है तो आयरन एंड स्टील उधर ही लोकेटेड है. Minerals, what did I say after that? Laborers, transport, हाँ etc. रिलीजन हो गया यार, अब बार बार जाकर वैसे भी आखिर पूछ लो सर. Now you can write a set of factors which I'm giving one first and then two. Okay, first you write down easy availability of. Point number one. This is for We factors here. Easy availability of. this was Oh, it was the meaning of localization. वो इतना कंफ्यूज है तो इधर तो पूरा गड़बड़ टोटल है. क्या है localization? क्या है? You will read better factors. अरे ऐसे ही बोलना क्या है? the way industry, एक ही है. well, industry. इसका मुझे मतलब नहीं लगता. Very good. What is localization, my dear? Don't read, tell me like that. वो थोड़ा टाइम लगेगा, स्टार्ट आता है. Last one. Tell me what is localization? आपका नाम सुन रहा हूँ. अच्छा ना बोलो. And you are Alanka. Ankana. Anka. Rachiti. Okay, thank you. जल्दी बोलो localization. Wait, can you tell me? Reason. Which reason? Hey, what is localization, Ayushi? Localization, what I believe is like local I don't believe. local availability of the raw materials
that we can find it somewhere easily, and I don't need to go somewhere very, far away to bring out the raw materials and For online, you don't go. Chalo, goods. very What? Asmi, you tell me what is localization? Localization, it is the availability of all the raw materials for all the local people, and Okay. Rajveer, Sir, same. आप same नहीं बोलने का, पूरा बोल. Okay, same. Sir, localization refers to availability of basic resources for the local people. तो मतलब मैं बाहर से आएगा तो तू मुझे देगा नहीं, निकलो बोलेगा. ठीक है, right on point number 1. Easy availability of raw materials and laborers. एग्जाम में सेपरेटली आएगा, 4 मार्क्स का भी आ सकता है. Easy availability of raw materials and laborers. Second point. Okay, next time bring that book. What is that? Anjana. Luckily, The line flow. yeah, okay. Line flow. No, point six. Second point. No, because I keep reading certain books to enrich my knowledge. Second point right now. And meeting us here. Very nice. Okay, that's up. I'll be meeting you next That Wednesday. made us easy. Wait, क्या Scanner भी acceptable. बहुत बड़ा है. कैसे Scanner volume करना है या chemistry? Explanation. That's line by line. Also, yeah. Sir, that's it. Second point, better transport. Communication. Better transport, communication, electricity, gas and water supply. Better transport, communication, electricity, gas and water supply. Sir, Next, gas and water supply. Next. What is next? मुझे सोचना है. Easy finance. मिल जाता है आजकल तो. फिर भी लिख सकते हैं. Along with additional insurance. और finance and insurance are additional. Easy finance and insurance So facilities. can you repeat? Easy finance and insurance facilities. Next. Suitable and cheap. Availability of land and cheap availability of land. Chain the para. Hence, the above factors. Are rightly termed, RAGHTLY, rightly termed as AS. I don't pronounce as us. Put it into double inverted comma. You write localization factors or locational factors, whichever it is correct. So thank you for allowing me to teach very good. I hope you also liked it. We got 1 minute. Thank you. You can relax. Next lecture में थोड़ा सा question answers भी करेंगे. And कौन अभी offline में आएगा next week? आदर्श आ जाएगा? Maybe मैं भी. आयुषी आ रहा? Very good यार. कब? क्या पता सर, 10 तारीख को बोला था, इन लोग खींच के 20 पे, अभी 30 बोल रहे हैं इन लोग. मैं पहले भाग के आ जाऊंगी. Ayushi का reduce the volume. Ayushi, your health is better now, dear.
Yeah, just my eyebrows are going on with the treatment, or else all my facial parts are recovering. Okay, okay. अच्छे से treatment कर लो, get well and then only come. Yeah, sure. Okay. Rajveer, Yes, sir. where are you now today? Sir, I am at home. I am suffering through fever. हो क्या रे आजकल फीवर बहुत आ रहा है. And Adarsh is a onliner or offliner? Offline, sir. कल next week आ जा, ठीक है? हाँ हाँ आ जाऊंगा.
Sir, you are muted. We cannot hear you. Sir. Sir, we cannot hear. It's muted. Sir, it's on mute. We can't hear. Now I removed it because UT doesn't organize all that stuff, and I'm the first or the last person because responsibility बढ़ जाता है. तो हम मैं भी पीछे नहीं सर. तुम्हारे लिए घूम के आओ. मैं आगे घूम. कौन जा? क्यों जा? आप उन्हें भी नहीं. अरे नहीं, they were only saying. I was speaking. कब देखते हैं. हाँ अभी टाइम है यार. By the time I might be in India or not, that is very important. Chalo. Now put the heading. We will go fast and quick so that this chapter is completed. At least this picture. Manufacturing में. Now we are actually starting textile industry. Okay. So come to page number 150. Correct. We are moving with agro base. Did you see that? ये कभी आया? पूरा फर्स्ट लेक्चर. फर्स्ट लेक्चर क्या हो गया? मुझे याद है तेरा शक्ल. पहले भी क्लास. ठीक है बैठ जा. We are going to textile industry first. Are we going? Are we going? Ask where? Textile industry. Flamingos. ए वो डीपीएस एरिया में आया है. That's what I could know. वो मेरे एरिया से थोड़ा नजदीक है. डीपीएस नेहरू नहीं है, सीयू. वो कॉलेज के बाद. Textile industry. Everyone be ready with the pencils. Underline the first point. Textile industry, underline, occupies unique position. Be quick, huh? I'm going to pull some people from that corners to somewhere here. How many are not having the volume? Why? Bol, I'm listening. Rajveer, is it? Page number 150. Second sentence. It contributes, underline, significantly. To which production? वो understandable. Only punch words हम लोग underline करते हैं. And employment generation, underline that. फिर पीछे आ जाओ. Second largest, next to agriculture. Okay. It contributes only, underline, 5% of India's GDP. GDP के सामने लिखो India's GDP. ये क्वेश्चन आता है बोर्ड में. It is the only industry in the country, open bracket. Now we will complete, which is self-reliant and complete. उसके ऊपर ही लिखो GR. What is GR? Give reasons. ये मैं आंसर देता हूँ बाद में. Then you look at that raw material cotton कैसा. पहला है fiber. उससे हम लोग क्या करते हैं? Spinning करते हैं. Spin करके क्या बनाते हैं? Yarn. Yarn से weaving, it becomes fabric. Are you understanding? I'll try to show the videos, huh? And then dyeing and finishing. What is dyeing here? Coloring. हाँ. कर दिया. अच्छा. अरे. चारों का हाँ. Break में क्यों गए? Almost. Why onliners went for a break? These guys went out. You also. Online तो on रख के जाना है. What is the page? 151. हाँ. Then let us see the second last arrow. Garment manufacture. Now, what is garment for you? Clothes. Very good. Shall I say this? Clothes, garments. Pure. तो तू मेरा quality बता रही है इसका. General क्या है? Nowadays, when we see cotton textiles, we have normally garments coming picture for you and me. Why? We are least bothered. Gone are the days when we used to go to a shop, purchase the meter cloth. And आप लोगों ने तो किया भी नहीं रहेगा वो. I remember going with my dad to certain school uniform purchase. तो ऐसा एक steel scale रखता है 1 मीटर का. तो ऐसा करेगा फिर टेलर के पास जाने का. Then you know how tailors measure चालू. फिर 15 दिन में जाओ. अभी there is nothing.
अभी ऐसे only cotton is manufactured, it is woven into cloth and directly comes out in the name of garments. What are garments? Ready-mades, है ना? Now anything we are going to tailors or what? Rarely we are going. Next. Put the heading as in your notebook, cotton textile industry. This I'll give you brief points quickly. And was self-reliant and complete मुझे याद दिलाना. I'll be giving reasons. Textile industry in India. Right on. Since independence, cotton textile is of vital, VITAL. Since independence, cotton textile is of vital importance. Underline that word vital. I am giving the notes of Excuse me, cotton. sir. Bolo. What are we doing right now? We are studying What notes are you giving? cotton textile, my dear. Hey, in the break, you don't check out. मतलब वो आपका online as it is रख के जाना. All I've checked out. Got it? Write down. Second point. Sir, Sir, it's notes or question answer? So initially it was handlooms. Later, bracket में डाल दो 18th century. Initially it was handlooms. Later, parlooms were introduced. How do you pronounce? हैंड्स पन मतलब जो गांधी जी का वो चरखा जैसा चलता था और आजकल ऐसा भी मिलता है एक बड़ा वुडन जो बंगाल में ऑलमोस्ट हर घर में दिखता है क्या you don't go to Bengal. Then next it is now we have these machines which are rotating. If you have seen, मैं वो दिखाता हूँ picture. अभी पूरा electricity से बनता है and it is very fast. We can say 100 to 1 ton meters in one day. Cloth spinning होता है. You haven't seen any cotton textile? Where? Where? South Africa. Why did you go to? Sorry. I am South Africa. Hey, Satara, where? Even I go to Satara sometime. Sir, my native place. Oh, तू माझा गावाला कुठे आहे तुम्ही सातारा मध्ये बहुत सारा काम है सातारा में Nice. अरे तेरा किधर है तो नाइस Sir, there people sit and there is like this circular thing which they sit and they. ये देख लो ये शायद कोलकाता ही रहेगी इनको मत देखो Sir, screen share. I'm sharing. Wait. Hey guys, be quiet now. Share the screen. No. Yeah, because ये लेनी चाहिए. अगर आप लोग स्क्रीन पे जो रोल देखेंगे ये कॉटन की बीम और इसकी जो क्वालिटी है वो 40-60 जो चलते हैं फैक्ट्री के अंदर और मैं आपको नजदीक से सब कुछ दिखाता हूँ ये हैंडलूम से मशीन के पीछे बीम लगी है और आगे से पूरा कपड़ा बन रहा है देखो मशीन कैसे वर्क कर रही है ये 40-60 की क्वालिटी कॉटन का बड़ा पन्ना का कपड़ा बन रहा है अभी आप सामान को मशीन जैसे की आवाज सुनो Let's don't see the screen. बात अभी देखते हैं आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपकी मशीन के नट को स्पाइडर से काट कर दो ये मशीन के इंजीनियर और इनको टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मुलाजिम कहा जाता है कपड़े पे ध्यान दे कपड़े का फैक्ट्री में सिर्फ कपड़े की मशीन बनाने के लिए जाता है मीटर आप लोग ये इसको की क्वालिटी को चेक कर
girls community, how much they are paying. इधर देखो अभी मशीन का टेस्ट क्या करती है, ये एरो मार्क लगा है, ये मशीन टेस्ट करता है, इसी से मशीन स्टार्ट। ये बेस है जो इंग्लिश जैसा मशीन के नीचे की तरफ आप देख रहे हो, यहाँ पे जो बड़ा सा रोल लगा है, नीचे वाले रोल में पूरा कपड़ा फोल्ड हो रहा है। अभी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो कि ये वर्कर एक धागे के अंदर एक पिन को डाल रहे हैं और ये पूरे ग्रीन में साढ़े 3,000 रहता है, एक का मतलब एक धागा। इस पिन का यूज सिर्फ को कपड़ा बनाने के लिए किया जाता है। फर्स्ट कॉटन, सेकंड पॉलिस्टर कॉटन। हमारा पिन का मशीन, इस मशीन में प्लास्टिक की पाइप लगी है जिसमें यहाँ के धागे को भरा जा रहा है। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारा रखा गया है और ये कॉटन का यार्न। वैसे अगर आप लोगों के मन में कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसी वीडियो चलने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आपको ये तो कोई कश्मीर का भाई लगता है। हाँ अभी नहीं नहीं, ये पार्लूम था। आई शो यू हैंडलूम। Handlooms, it is Kolkata style. I need to purchase for my Singapore. Yeah, handloom. हाँ broken. हाँ ये है, बड़ी ले लिए, चलेगा क्या? तूने देखा ना लेना? This is Khadi Sun, Rajasthan. Yeah, exactly. This is this Khadi area, you can say in Rajasthan. This is handloom. You are too good. अभी मुझे मालूम पड़ा, मैं नानी बोल के गलत की। ये हैंडस्पन, वो जो स्पिंडल बन रहा था अभी हाथ से बन। देखो नानी है क्या? नहीं अभी ये हैंडस्पन एंड देन शी विल रोटेट इट। एक हाथ से ये मैंने किया है बट ये स्पिंडल बन रहा है। And these sarees are costly, handspun sarees. बोला से लगा है आप लोग का बंगाल साइड में पूछा 2,500 बोला, फिर मैंने बोला मामी बोले मैं नेक्स्ट टाइम बंगाल जाएगा तो आपको मालूम हो जाएगा। But I don't wear saree, very good. This is the other stage. I have seen this girl also. हमारा बच्चा बोले यार टीचिंग सो की यही देखो। हाँ नाउ शी पूछ मतलब वो थ्रेड आके ऊपर जाएगा। यू सी तब आपको लिख के बट थोड़ा सा विदाउट एनीथिंग यू कैन यूज। लोग हाउला एक नानी दूसरा नानी के बारे में यानी के लिए I've got one more you also. And now you understood what is parlums and handlooms? हाँ वो आएगा पॉपकॉर्न के साथ। चाहिए? Hey guys, chalo, right. I was giving notes only for explaining. Okay, let's proceed. Point I have given. Next point. Write down quick.
Since the British rule in India, since the British rule in India, put a hyphen. Tell me when to when British rule. 1820 to 1947. 1940. 790. I can't use the word shame on you. Sir, when did British rule started in India? Sir, that was East India Company rules, sir. Ah, so what? That British rule you are. ये ब्रैकेट में लिखो इंडिपेंडेंस ईयर भी याद नहीं है Sir, मुझे sir 1820. ठीक है लिख ले The You write since the British rule in India 1757 to 1947. Right up. This industry suffered. This industry suffered a severe setback. This industry suffered a severe setback. BAC क्या? Since okay, next point. The first successful textile mill. The first successful textile mill was in Mumbai 1854. The first successful textile mill was in 1854. Next. Correct. Not in Kolkata. Hey, Kolkata. 1854. Next. 93% of cotton cloth produced, 93% of cotton cloth produced are in decentralized sector. And this is the meaning you have to write. What is decentralized sector? And you write 93% of the cloth produced are in decentralized sector, which means small factories. Decentralized ka meaning, huh? With 2, 10 looms. 10 looms. तो थोड़ा कनेक्टिविटी का इशू है 4 to 10 looms. थोड़ा एंटीना को लेकर ना. Hey, look here. Since British arrival, you know 1757 what has happened? Yes, sir. What has happened? Establishment of East India. But what was that? 1757 क्या था? Battle of Plassey. Sirajuddin Dowlah and British. Then came Sirajuddin, not Dowlah, Mir Kazim. Then Mir Jafar. And finally they disposed to the Bengal ruler. His name was Sirajuddin Dowlah. Then it was Battle of Buxar, 1764. I remember that word as Buxar. Both are in Bengal, not modern Bengal, old Bengal. Okay, so this is how we say 1947. You know what has happened. India got independent. So this is how we say the industry had a severe setback. East India Company came to India in search of what? It's an allegation. I take him and go back. Resources. Which resource? Cotton textile में भाई साहब spices ला raw cotton. Industrialization took place where? England. और इंग्लैंड में कहाँ? मेरा postal address देख. London. And it was America which was supplying raw cotton to England. America had this American War of Independence. So they abruptly stopped the cotton supply. Now the British cloth needs more raw material.
then they could have died. Who? India. डायल नहीं था, तो उनको मालूम पड़ा कि इंडिया में कॉटन बहुत ग्रो होता है. सो मेनी कंपनीज का विंग्स आया, उसमें एक कंपनी का विंग्स इंडिया में भी आया. एंड यू नो विच कंपनी इट वाज. One group went to even China. In those days, they were kings. I remember one year I taught 12th standard Chinese history. That was a very nice year because I used to prepare Chinese names and kings, but मैं भूल गया अभी, उतना याद नहीं है. The King dynasty. Chinese king, what did he say? British East India, I'll tell you, the entire dynasty. I'll tell you, when they went in, he said, no problem. You want to trade with China? Ready. The British were very happy. China, he said, you have to put your head on my feet at least 3 times. Do you think British might have accepted? Well, sorry, sir. Then you will like, get up. Whereas in India, we know this Atiti Deva Bhava culture. आपके घर में अगर पहला टिंग डोंग वेकेशन है ना, and then the guests come in. But guests को तो फिर भी आप बेयर कर लेता, but वो बच्चे लोग हैं ना सर, they are the model sir. And आपको मारने का भी मन करता है और आपकी आंटी आ जाती है, अरे कितना अच्छा, बाद में तुझे देखता. So when this British came to India, they came for 2 things. One was raw cotton. Second, they wanted a market. Did they get it in India? Definitely. But let me be very frank and free with you. Our cloth was more in demand than British cloth. Not in India, but in London. जैसे मैं आपके पास कुछ बेचने आ रहा हूँ, आप मुझे 10 कमोडिटी बेचिए. सर मैं तो बेचना है, खरीद के जा भाई. You know what British government in London did? They made a strict law. Anybody purchasing even a handkerchief piece cloth made in India, heavy penalty. And you know, here they want the weavers not to weave the cloth. और Indians है, हम लोग तो rules follow नहीं करते. So who did not follow the rules of British? Hands were cut off. That was a severe punishment given by the British. अभी मुझे लगता है ये punishment है ना, जिस handwriting खड़ा है इसको डाल है ना, always है ना, blow nail कर रहा था नहीं, but hands cut off कैसे करेगा? I will file a case against him. कुछ नहीं, बोल रहा हूँ. So this is how they made our cotton come to an end. And I don't know how many of you have understood history in detail. We have one person in South, not had, we had. मैं महाराष्ट्र में born हूँ. I'm Maharashtra born and born. I went to my hometown when I was in 12th. तो तब मालूम पड़ा ये सब ऐसा है. So that person has started a ship of his own. Because in those days when Indian merchants used to enter into British ships to go to London, they were really doing a lot of unwanted things with them. Heavy tickets, दुनिया भर का चेकअप, फिर बोलेगा नहीं आप किधर जा रहे लंदन, ट्रेड है तो लोग निकाल देते. His name is Mr. Chidambaram, Vavu Chidambaram. He is a freedom fighter. He made a big ship out of his own money and let that ship roll right in front of the British, and he said no tickets, free of charge under this. तो ब्रिटिश बोल रहे थे 100 रुपए में बेच रहा था, उस दिन का 100 रुपए इज वेरी बिग फॉर देम. और ये बोला कुछ नहीं देने का, लंदन जाने का, ट्रेड करने का, मेरा शिप. तो ब्रिटिशर्स वर शॉक्ड टू सी व्हाट दिस इंडियन मेड fellow is doing. So these kinds of things have happened with whom? With our Indian cotton company. Because today also this cotton, why I said 100% self complete and self-reliant. Raw material is from India, demand is from India, laborers are from India, and market is also India only. हाँ, बचा हुआ cotton हम बाहर export करता है, but 100% complete है ये. Can I say any other industry in India is 100% complete? Not so, as per our syllabus, हाँ वो बात नहीं. But then cotton is only one industry which is biggest employment next to agriculture. समझ में आया? Right on. 93% हो गया, decentralized. Then the last sentence. Hence, cotton was a successful agro-based industry. Was successful agro-based industry
with 80% in private sector and only 20% in public sector. क्या अभी मालूम है ना what is private and public sector? 80% of cotton textile are in private sector, only 20% are in public sector. अभी this I want you guys to write. देखो मैंने इधर दिया है what is location है ना, तो you write location of cotton textile. ये 3 पॉइंट अपना ओन में लिखो, ये मैं बता दूंगा which states to be writing. Page number 151, you write the heading in your notebook, location of cotton textile. And tell me, location of cotton textile, the heading. सिर्फ लोकेशन का पॉइंट लिखो, which are the industry I like to do. Completed? Yes. It was localized, raw cotton वो सब लिख सकते हैं. Transport facility, उसको ब्रेक करके 2 या 3 पॉइंट बनाओ. Don't write only 1 point. Right? Yes. Coming back to check. Right? Points नहीं तो location लिखा ना उसके इधर. You are going up to that today cloth textile. वहाँ तक आपको लिखना है in your own sentence. Location and start up till that today. उसके बाद I'll give you the places. हाँ but मैं टिक करूँगा वे सारा places नहीं लिख उतना जरूरत नहीं. Come up to that name of the Maharashtra and all that I will make you put it. तो हाथ के लिए तू इस तरफ आ जाना my dear friend. बैग तो डाल दे. मराठी माणूस इतना टेंशन. Anyone completed? Completed. Then please tick these places everyone. For Mumbai ये notebook में लिखना पड़ेगा. Mumbai, Maharashtra you tick Mumbai, Solapur and Pune. For Gujarat very important ना Ahmedabad and Surat. WB, what is that? It is Murshidabad and Hooghly. Gujarat, Ahmedabad and Surat and even Vadodara. Actually Surat is start हो गया.
सब पीछे पीछे. Let us go to UP now. कानपुर and मुरादाबाद. ये मोदी नगर भी है, एक्चुअली ये मीरठ में है. And MP, two main places, Gwalior and Ujjain. And Tamil Nadu, oh my hometown, huh? It is Coimbatore नहीं है, Madurai also. नहीं, Coimbatore and Madurai. Madurai is my hometown. जब भी आप रामेश्वरम जाएगा फिर हमको क्रॉस करके जाना. Coimbatore and Madurai. Put all this in your notebook. Very important, they'll ask you. In Tamil Nadu, give 2 places. In Maharashtra, you give me 3 places. West Bengal, 2 places. So you have to remember which are very popular. Write it in the notebook. As long as you're outside the soul, be happy. There are people who are saying, I'm the British ruler. I'm not the British ruler. Cheer up, for those people and also those in Ireland. Well, France people. हमारे इतना तो है ना? बिल्कुल. Like last year. This next week. Okay, guys, you have written. Complete it quickly. I'm spending good deal of time with these industries. Sorry, with Copenhagen. Along with the industry. I'm very fast to learn other than so the classes will go. Not for late. We can do the work. Completed. Let me see your. Why did you bring your volume? Last time. एक दिन आप अपने फोटो सो रहे हो. Give me red pen. Anybody using? So you are Bhumi. Okay. कैसे बुक में चलेगा? Yes, my dear. Thank you. सीधे वो Come here for 2 minutes. What is the name? Bhumi. Then you should have sit. You should have made the marking, na then. मैं तो पालनपुर कहाँ से you will answer. Thank you. Hey guys, finish it. Yesterday I was correcting Washi branch 1 notebook and girls and boys were saying better sir, आप correction ही मत करो. Pulling out each and every mistake. मैं correction लेगा आपको correction तो मुझे कौन बोलती है? अगर मैंने correction ले लिया तो देखिएगा. Hey guys, complete your notebooks on 1 by 1. I'll check it. ये क्या? ये क्या है? Anybody completed?
Hey guys, anybody completed? Write the next heading in your notebook. जिसका नाम तो लिखना मेरे को. Sir, नहीं, I am seeing quadrilaterals in geometry. we should not. You should. No, I want my own note. Quadrilaterals doesn't have to. So don't worry about that. Okay. Yeah, you cannot start. You can geography can very. Then. I said and get it from them. Online if you have written. Online as I have completed. Yes, Write sir. write the next heading. It is a board pattern question. Please write down. Explain the importance of. Explain the importance of. It's a board pattern question. I am giving the answer. Importance of cotton textile industry in India. Explain the importance of. जल्दी करना cotton textile खत्म हो जाएगा. Cotton textile industry in India. Right now. It is the only industry. Oh, बाद में लिखो ना. It is the only industry which is 100%. It is the only industry which is 100% complete and self-reliant. Not reliance, huh? 100% complete and self-reliant. One more sentence. Since independence. Since independence. Sir, A leading industry. A leading industry for employment. For employment and GDP contribution. GDP मतलब national income. Gross domestic product. yes. Employment and GDP contribution. Next point. It is the only industry. I'll try to give short points now. It is the only industry closely linked with agriculture. Closely linked with agriculture. Next. Both directly and indirectly. Both directly and indirectly. Generates employment. In great numbers. Next. But वो numbers directly or indirectly. अब indirectly क्या है? Anybody dyeing, packing, है ना, transporting, वो सब indirect होते हैं. Next. Both power looms and handlooms. Both power looms and handlooms. Along with khadi. KHDI. Both power looms and handlooms along with khadi are profitably employed.
Next. खादी ये जो आप लोग ये पॉलिटिशियंस और कुर्ता वगैरह पहनता है ना वो एकदम कुर्ता रहता है खादी यू डोंट नो अरे गांधी जी ने खादी इसलिए स्टार्ट किया था सो दैट इट इज चीप बट अभी आप खादी का एक कुर्ता लेने जाएंगे ना इट इज वेरी एक्सपेंसिव ये पॉलिटिशियंस कुर्ता पहनते हैं जैसा व्हाइट शर्ट रहेगा और उसके ऊपर से जो जैकेट दैट इज खादी एंड यू सी नाउडेज इट इज अवेलेबल इन एवरी गारमेंट स्टोर खादी का कपड़ा देखो एकदम अलग अपीयरेंस रहता है बट थोड़ा सा वो रहेगा नॉट वेरी रफ रहेगा रफ हाँ correct correct right the next one profitably employed employed India exports in between the break circle and raw cotton yarn and finished cloth to Japan continue to Japan exports to Japan US UK Russia it's pronounced like that in France and Asian countries Sri Lanka Singapore and Asian countries Sri Lanka Singapore SL Daluna Russia, France, and Asian countries. Sri Lanka Singapore and only AP no Sri Lanka लिखा Singapore you can write Malaysia also इधर नहीं लिखा but you write Malaysia करते हैं हाँ तो लिखो ना that's what we use our own class and African countries तो इंडिया का रॉक कॉटन कहाँ नहीं करते and African countries now there are questions starting from page number 151 up till 152 I want you guys to learn this problem space तो मैं दूंगा let me see how many are going to answer these questions Sir, page number 151 to 152 up till problems everyone learning that answers before the problems you are learning everything huh? Very important question I could see people are in between the my notes also talking, in between the learning also talking. Yeah. That is not. Right? You know the why do you take me for granted? I sell now. Where is this? Oh, sorry. Because with me, say this. That's the way. Anybody ready with the answers? First हो गया? Yes, sir. मैं तो थर्ड करने वाला है
What is that? Please. No. You learn, keep learning. I will make the whole class to cry today if they are not answering. Yeah. लूमेज मतलब बोलता ना सिचुएशन हैंडल इनका रोड़ा इनके कभी भी बंद हो इट इज मूविंग ओवर यू पहले देखा हो स्टेबल उनको इनकम नहीं what is it what is the word all the 3 pages 2 pages 151 to 152 problems I'm going to give the other things you are going to learn got it पूछ What is the meaning of middle sector? ये अभी पूछा है उसको समझा यार here there is one point called mill sector loomage now the mill that is power loom or hand loom it is hanging in the air मतलब कभी भी बंद हो सकता है गवर्नमेंट का सपोर्ट तो नहीं है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में है और बड़ा बड़ा कंपनीज जैसा बॉम्बे डाइंग्स है ना और लोकल जॉनसन एंड जॉनसन ये जो आनंद महिंद्रा का कंपनी है उन्होंने ये छोटा छोटा कंपनी को ऑलमोस्ट एंड चाइना से पहले हम लोग इंपोर्ट करता था रॉ कॉटन फिर कॉटन बनाता और हमारा कॉटन किधर जाता नोबडी इज परचेजिंग तो पावर सेक्टर लूमिंग मतलब दैट इट कैन कम टू एन एनी टाइम इट इज लूमिंग अराउंड समथिंग लाइक दैट यस रेट पेन के साथ लेके आऊं That Bitcoin में इन्वेस्ट करें तू मत कर नहीं कर कौन कर रहा है तू कर रहा है फिर आपको से तो दे पैसे बढ़िया आ जाए तो पैसे देना मुझे ए गाइस जल्दी करो Yes. Very good, huh? This boy is doing very fast. He is my boy, huh? अच्छा उसी दूसरे को what does he do? Why is it important for the countries to keep the middle sector always over than power? Hey guys, who had completed? देखो one notebook I'm checking side by side. भूमिका हो गया, इनका भी हो गया. हाँ, तेरा quadrilaterals में नहीं करूँ.
मैंने देख लिया ना कॉटलर। अब वो पेन दे देना फिर उसको why I'm not correcting it to be डेवलपमेंट का हेडिंग ना अरे उसका नोटबुक का भी मैंने उसे करेक्शन नहीं फिर होता है डेट ये मैं तो हेडिंग ही नहीं करना whose rules it is anybody needs क्या है डेवलपमेंट नाम नहीं क्या है और ये उटोपियन नहीं वो भी आजाद हो गई तो ये क्या है पैसा आया that is understanding economic development. That is not really hope that the poor everybody take it. The other data date, सुंदर रेटिंग तो मैं डाल दिया सुंदर ये डेवलपमेंट आज का डेट में नहीं था वेट द डेट the date याद नहीं सर तो मान याद वेट डेवलपमेंट में कौन सी डेट है ये डेवलपमेंट में लिखी है ये मैंने तो यही कहा कि रास्ता क्या है स्टार्ट लास्ट लेक्चर में मैन्युफैक्चरिंग and did I start the manufacturing today only that date क्या दिया लास्ट वही बोल रहा हूँ चलो काउंट डेट the date लिख दिया the date yeah actually because my government officer signing the file that है ठीक है लेकिन राउंड very done it's in board 14 क्या लिख रहे नॉर्मल CSCR ये ऐसा जोड़ी बट लेकिन तो समझा है फाइल क्या है तेरे को रिपोर्ट दो तो हमारी मांगे आप लोगों ने देखा एक वो यूट्यूब पर हां व्हाट इज द नेम ऑफ लेडी तेरे को इधर आ राजस्थान नहीं है लेडी बोलते तो उतना डिटेल चाहिए क्या नाम क्या नाम तेरे ये मतलब ये यूट्यूबर ब्लॉगर है ब्लॉगर she goes to Pakistan, she goes to China. And क्या करते हैं? She was supplying all the sector news to the Pakistani. उधर का जनरल लोग से ये मिल क्या है? मंडर और उधर जाके फ्रेंड में आया तो आप गए ये लग रहा है उसको लेकर आके तो ऐसा ढूंढना है वो काफी पाकिस्तान ट्रैप है या मैं इसकी रजिस्टर बोले ये हम फाइल ऑल्सो यार चार तो 3 महीने में एक बार चैनल ज्योति सर हां सर ज्योति से सही है हां ज्योति सर कर्मा तो हां ज्योति सर who is enjoying time there yes to be सर ज्योति नाम उधर हो गया सर सभी का ज्योति है टीम को अभी इंडिया कैसा कैसा लोगों को पकड़ के अंदर डाल के जोड़ रहा है ना वेरी हैप्पी पर कैसे बोली नहीं को पूरा करके तब अगर मुझे मालूम होता तो मैंने पकड़ लेता तो ऐसा डिटेल दूसरे के आएगा तो ये सुनना चाहिए सर अच्छा विदेश अपने साथी कुछ बोला है वो तेरे साथ से कोई ऑटोग्राफी अब ऐसा बड़ा बनाएंगे तो दिल्ली की जिस दिन बनूंगा पहला ऑटोग्राफ पिक्चर्स में भी सिंगर स्टार्ट हो गया कौन है उधर जाना यहाँ पे कागज कर लो Yeah, what is this sustainable development? इसके आगे कौन है लिखेगा? ये किसका बुक है? अपने इन्होंने बैठ दिया ये कंप्लीट टेकिंग कर दूँ। तब कंप्लीटिंग ईच तो अंत का नाम है क्या बेटा एकदम बोर्ड से है ना ब्रेक में जाता है ना
I'll be having my small. French 40%, Dutch 59%, German 1%. सबको एक मिनट आते अरे मेरा नहीं इधर मेरे को एक गुड दिया था French culture modern world है आगे. Petrol is a fiat, though this I can't say. मेरा गुड दिया मेरा कोई सीखी ओए बाथरूम में कौन है गाना गा रहा है? Show your notebook. I can't. There is a lot of things that you have done. How do I understand all the program? And people take a bathroom to the बताए मेरे चार हो गए You want the culture? Another thing that we are making or we are doing for it. Hey, you slow, please. You the thing you get there. इसका टाइम टेबल नहीं दे देते कितने मार्क्स Do you think we are discussing cup of coffee or not? Huh? Next week. ऐसे नहीं जा सकता और क्या करो ये टेस्ट करना ये टेस्ट का दो टेस्ट इजी वो देखो I like the what's your name, dear? They look at long thing very they know it's
Hey guys, give the notebooks here for checking. I'm taking the notebooks and some bunch of आशा बोझ के टीम क्या चालू कर रहा है अभी नहीं आएगा अभी इधर प्लीज देखते ही तुरंत नोटबुक लेकर आ रहा है एनीबडी इज यूजिंग द टाइम फॉर Also we are using mobile. What are the reminders of the work? We are continuing. Corrections are done. Carry on. In between, I could hear some. Yeah, Arjit Singh fellows. Importance. Right now. List out. Write the question. Oh, in Naina community. Likho. List out. I need to see your fair notebook, boy. My next lecture. Complete it. In my last lecture, list out main problems of cotton textile industry. List out. मैंने फेंका. List out. इतना भी कुछ असंभव नहीं हुआ. List out the main problems of. Now I'm starting the answer. She started singing us. Okay. So when I was checking what you are doing. No. Main problems of cotton textile industry. हम क्या बोलते हैं प्यार सा कुआं के पास जाने के कुआं नहीं आएगा. List out main problems of cotton textile industry. It is a very important question. So please write it carefully. I am going a little bit faster, which normally I do. Problems of cotton textile. Point number 1. Ready? Since its inception. What is this English? You never allow me to improve my English. What is the meaning of the word inception? Start. Confusing of reality. Introduction. Either again introduction. He's saying, Movie. I love that movie. Since its inception, and wait, geography. Right. Problem. Since its inception, impacted Indian economy. Since its inception, impacted the Indian economy. In a big way. Way. W-A-Y. But below mentioned problems. Full stop. But below mentioned problems force below mentioned problem force its decline.
below mentioned problem force its decline. The slowly decline of assembly. Point number 1. Irregular. Irregular. Onliners, are you able to hear me? Yes, sir. Write down the problems. Irregular. Right? Right? What? Expensive power supply. Irregular and expensive power supply. Right, yeah. Power supply. Second point. Sir, can you repeat the first point? Irregular and expensive in power supply. Second point. Less efficient, and low productivity of laborers. Less efficient and low productivity of laborers. Next. I'm putting next. Import of cotton ब्रैकेट में डालो लॉन्ग स्टेपल कॉटन इंडिया में कम है वो इंपोर्ट ऑफ लॉन्ग स्टेपल कॉटन अब ये सबसे बड़ा पॉइंट है यूज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स मोर सिंथेटिक नहीं मालूम है ब्रैकेट में लिखो मैन मेड न्यू पॉइंट यूज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स मोर सिंथेटिक के लिए लिखना मैन मेड use of synthetic fibers more. क्या है synthetic fibers आगे लिखो nylon cheryl oh my god I forgot that let me put that one first polyester sterling एक्सेट्रा ये क्लॉथ आने की वजह से कॉटन क्लॉथ का प्रोडक्शन कंजप्शन कम होता है TERI एक्सेट्रा नेक्स्ट TERI अच्छा वाई है श्योर है हाँ देन इट इज वाई तो लेवल्स मैं वाई डाल रहा हूँ चेरिल नेक्स्ट पॉइंट fragmented, scattered. Since 9th standard they are doing the same, and I am also behaving same. जब मैं बिजीली बोलता हूँ क्यों आप एक दूसरे से क्या बड़बड़ चल रहे हो क्या वोटर आईडी I'm out of all this. I don't understand. Fragmented and scattered production units. Fragmented and scattered production units. Next. Stiff competition from global mergers. Stiff competition from global mergers. Last point. Write first. Did you write? What? Full stop. Next. वो हो गया यार लास्ट change in fashion habits and preferences. Sir, can you repeat? Change in
habits, taste and preferences. हाँ एक ही है जो भी है देखो फिर वो आगे का बोलते हैं of the youth community ये जो जीन्स वगैरह पहनते हैं of the youth community आप लोग है ना वो क्या बोलते हैं हिंदी में कहते हैं ठंड रखो आराम से लिख थोड़ी जल्दी मैं निकल जाएगा ना एक दिन तक लिखते रहो हाँ a youth community टेरिलिन कॉटन आप लोग किधर यूज करते हैं पॉलिस्टर आप यूज करते हैं किधर है लिखा है पॉलिस्टर वो क्या सुबह मैंने अभी लिखा इससे एंड ये जो यूथ कम्युनिटी है ना ये स्पेशली जीन्स आई वाज एक्सप्लेनिंग इन खारगर आई रिमेंबर jeans was introduced in America as a laborer's dress because बेचारा हर रोज ऑयल कंपनी में काम करते थे हर रोज नहीं धोते थे तो जीन्स उसलिए लाया अभी हम लोग तो जीन्स इतना महीना पहनते इतना महीना पहनते बाजू वालों बोलते ये मरा हुआ चूहा कुछ नहीं वो 2 साल से धोए क्या अरे जीन्स ये शाहरुख रिलीजेस द स्टेटमेंट आई डू नॉट वॉश माय जीन्स फॉर नेक्स्ट 6 months मतलब भाई साहब वो पैसा जितना रखा है ना उसका आधा देते मैं तुमको देता हूँ हाँ ये ऐसा आइलैंड इन अबू धाबी खुद का और आजकल वो लड़कियां पहनती हैं व्हाट इज दैट ड्रेस उस पर वो भी एक्चुअली अभी बोलने का नहीं है टू एंगल्स वो कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए लाया था वो तो अभी फैशन ही बन गया अरे वो लाइक का कुछ रहता है ना आप लोग तो लेडीज वेयर तो सर्टन ड्रेसेस ना ओनली यूथ में देखा गया है अभी फॉर एग्जांपल इफ आई वांट दिस कॉटन शर्ट आई नीड टू आयरन इट वॉश होने के बाद रिंकल्स आ जाता है अभी शर्ट्स है जो मैंने एक ऑनलाइन से लिया रिंकल फ्री शर्ट्स मतलब वो शर्ट को ऐसा ऐसा करके भी फेक ऐसे ही रहेगा एंड मेरा मॉम ने सडनली कॉफी डाल दिया मतलब डोंट वरी 2000 का शर्ट है उसमें एक ड्रॉप कॉफी का स्टेन नहीं लगा तो ऐसा शर्ट्स है ऐसा ट्राउजर्स है और ये क्या क्वाड्रा क्वाड्रा वो मैंने भी लिया है व्हाट इज क्वाड्रा आई डोंट नो ही हैज रिटन क्वाड्रा दैट इज क्वाड्रा देखो शी इज वेयरिंग तो ये यूथ में फैशन है दैट इज व्हाई कॉटन इंडस्ट्री इज गोइंग बैक इज इट ओके एनी पॉइंट यू वांट टू एक्सप्लेन शी वाज वेरी कंफ्यूज्ड विद एनी पॉइंट all good to go write the next industry in your notebook jute textiles hopefully we'll finish up this तो एक काम करते हैं ओनली हेडिंग डालिए हम लोग रीडिंग करते हैं है ना एंड परिणीति व्हाट इज द नेम शी विल रीड फ्रॉम jute textiles ओके नाम पे कोई रिसर्च नहीं है jute textile please stand up and do it only for you अभी देता हूँ hey what is the name read my dear Sir, page number. रुको रुको हर रोज पेज नंबर पूछता है ना तो टर्न करके इधर उधर देख नहीं सकता take the come on how much time she is getting ready The first. stand up I can see properly from here say hi to me हैं क्यों अभी पढ़ो क्यों दो मिनट बैठो my dear when I say jute textile you know which textile are we referring if you have seen the gunny bags in which this rice and wheat are packed they are jute and no doubt India is very good with this jute but again as he was asking sir change in taste and habits or youth ka to dono same hi hua if I give you a bag which is having a bamboo stick with that big rough you will not pick up but plastic bags are there sir idhar udhar dura ke leke ja sakta and you go to Kolkata the number 1 producer of jute beyond this Hooghly river now it is Bangladesh which is number 1 in jute understood what I am saying it is very very study material आप वो सुतली जो बोलते हैं मराठी में या हिंदी में you try to break it with your hand it is impossible in fact when this bamboo building का जो paintings का काम रहता है जो rope बनता है that is also jute only it is so good so next to cotton jute is the second employment sector
But what has happened to jute? Slowly and steadily, people neglected the use. What is the good thing about jute? It is eco-friendly. And second, it is biodegradable. Third, I heard certain Bengalis eat the leaf also. It is very healthy. So right from the stalks, I'll show you the jute today only. So this is what was jute. अभी गवर्नमेंट ने नेशनल जूट पॉलिसी बनाया है 2005, आपको रहेगा बुक में. गवर्नमेंट ने बोला कंपलसरी जूट यूज करने का. कहाँ? एटलीस्ट इन राशन शॉप 20%. 20% वो पैकिंग ऑफ राइस एंड मीट इज डन ओनली इन जूट. तो इसका एडवांटेज क्या होगा? वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ जूट, which we will be discussing later. Understood? Now you read. Read. Underline that word 70, is it? देखो ये भी पार्टीशन के बाद प्रॉब्लम हुआ है इंडिया में. Go ahead. Let's take on 80% of the goods are produced. Hmm. Andhra Pradesh, 10%. Bihar, UP, MP, Odisha, Assam. Put all this into bracket after Assam it is. देखो 80% तो एक ही स्टेट प्रोड्यूस करता है, which is that state? वेस्ट बंगाल. एंड ये बाकी जो स्टेट्स है ओनली 10%. फिर बचा 10% वो प्रोडक्शन ही नहीं होता. होता भी रहेगा, इट डजंट रीच द मार्केट. So these people are poor now. Jute, it is neglected by the government. Underline that. River Hooghly. Go ahead. In a narrow bread, 98 kilometers long and 3 Okay, sit down, mind. That's enough. Now let us go to features. The next person, Bhumi, na? Gunny bags, carpets, ropes, handicrafts, commodities, and वो doormat जो हम लोग रखते हैं ना, प्लास्टिक वाला नहीं, दूसरा, that is also jute. Yes, Bhumi, continue. Features. This is the second important next important. Pin her little bit. What she was doing when she was reading. This is the second important industry next to cotton textile. Underline everyone. Second most important. Next is antenna. Read. Work. India ranks number 1 in the production of cloth. So dedicated, huh? Go ahead. Go ahead. India is second place in export after Underline. देखो बांग्लादेश से भी हम पीछे हैं. नहीं, they are the main producer. Go ahead. importance. Now you said next question. Importance. The jute industry was supporting 6 lakh workers directly in 2020. Another 40 lakh small and marginal. Oh, look at that number. पहला लिखो 6 lakhs underline करो and put that heading as directly. What is that? You said that. Good. Then 40 lakhs indirectly. Now who can tell me indirectly? I'm asking what is indirect. पहले तो डाइंग होता है, पैकिंग होता है, ट्रांसपोर्टिंग होता है. There are various activities, not only production. Small and marginal farmers are engaged in cultivation of jute and mester. Many more people are associated indirectly. Okay. Carry on. The next part. Promotion of jute industry. Yes. Mention the various measures taken by the government to boost the production of jute goods. Government policy of mandatory use of jute tracking has increased internal demand. However, to stimulate demand, the products need to be diversified. Underline the word diversified, everyone. ऐसा नहीं कि सिर्फ गनी बैग से बना करो. We should make many things out of jute. Go ahead. National jute policy was formulated in 2005. The objectives were increasing productivity, improving quality. Please put a star mark to that national jute policy and they will ask you. What all the objectives they are listing it up. Go ahead. Yeah. Improving quality, ensuring good prices to the jute farmers, and enhancing the yield per hectare. Underline all that.
Any of the point you want me to explain? Now sit down, Vatsalya. Thank you. Now look here, this is the jute plant. At least you and me might not have seen. At least you'll understand. Producer of jute followed by Bangladesh. Jute is primarily grown in West Bengal, Odisha, Assam, Meghalaya, Tripura, and Andhra Pradesh. The jute industry in India is 150 years old. There are about 70 jute mills in the country, of which about 60 are in West Bengal along both the banks of River Hooghly. Jute production is a labor-intensive industry. It employs about 2 lakh workers in West Bengal alone and 4 lakh workers across the country. Jute is the only crop where earnings begin to trickle in way before the final harvest. The seeds are planted between April and May and harvested between July and August. The leaves can be sold in vegetable markets for nearly 2 months of the 4-month jute crop cycle. The tall hardy grass shoots up to 2.5 meters and each part of it has several uses. The outer layer of the stem produces the fiber that goes into making jute product. When I say golden fiber, this I'll give the next lecture. Look at that fiber. Is it appearing golden brown in color? Yes, sir. They said this is so important. Packaging के लिए अगर कोई environmental friendly material तो यही. But now we are using different cardboard, silver, plastic, silver. There are many other things we are using. Okay, so I will be giving. But the leaves can be cooked. The inner woody stems can be used to manufacture paper, and the roots, which are left in the ground after harvest, improve the yield of subsequent crops. Compared to rice, jute requires very little water and fertilizer. It is largely pest resistant, and its rapid growth spurt ensures that weeds don't stand a chance. To top it all, the monetary returns on jute are twice that of paddy. An acre of land produces approximately 9 quintals of fiber. Not only does this wonder crop bring home higher returns compared to most cash and food crops, but it is also a massive winner on the sustainability front. Jute is the second most abundant natural fiber in the world. It has high tensile strength, acoustic and thermal insulation, breathability, low extensibility, ease of blending with both synthetic and natural fibers, and anti-static properties. Jute can be used for insulation, replacing glass wool, geotextiles, activated carbon Cannot see. wall coverings, garments, rugs, ropes, gummy bags, handicrafts, curtains, carpet backings, paper, sandals, carry bags, and furniture. So we cannot see the screen. By Yes, various sir. But the jute industry is in dire need of basic. What happened, Anishi? We cannot see the screen. Kindly initiate the screen sharing, I guess. Nobody shared, my dear. Yeah, so that I can comprehend every detail effectively. You know? What then all this time? Oh my god, entire video is gone then. Sorry. You right? अभी नहीं समझता है just 1 minute guys. I don't know. Last lecture. You right? Once more. दूसरा video लगा. Am I operator here? Is it now seen? Yes, yes. Yeah.
Yes. Yes, Okay, sir. let's understand this. Jute is primarily grown in West Bengal, Odisha, Assam, Meghalaya, Tripura, and Andhra Pradesh. The jute industry in India is 150 years old. There are about 70 jute mills in the country, of which about 60 are in West Bengal along both the banks of River Hooghly. Jute production is a labor-intensive industry. It employs about 2 lakh workers in West Bengal alone and 4 lakh workers across the country. Jute is the only crop where earnings begin to trickle in way before the final harvest. The seeds are planted between April and May and harvested between July and August. The leaves can be sold in vegetable markets for nearly 2 months of the 4 months jute crop cycle. The tall hardy grass shoots up to 2.5 meters and each part of it has several uses. The outer layer of the stem produces the fiber that goes into making jute products. But the leaves can be cooked. The inner woody stems can be used to manufacture paper, and the roots, which are left in the ground after harvest, improve the yield of subsequent crops. When rice, jute requires very little water and fertilizer. It is largely pest resistant, and its rapid growth spurt ensures that weeds don't stand a chance. To top it all, the monetary returns on jute are twice that of paddy. An acre plant produces approximately 9 quintals of fiber. Not only does this water crop bring home higher returns compared to most cash and food crops, but it is also a massive winner on the sustainability front. Jute is the second most abundant natural fiber in the world. It has high tensile strength, acoustic and thermal insulation, breathability, low extensibility, ease of blending with both synthetic and natural fibers, and anti-static properties. Jute can be used for insulation, replacing glass wool, geotextiles, activated carbon powder, wall coverings, flooring, garments, rugs, ropes, gunny bags, handicrafts, curtains, carpet backings, paper, sandals, carry bags, and furniture. A golden fiber revolution has long been called for by various committees, but the jute industry is in dire need of basic reform. Two major problems of the industry are obsolete processing technology and the lack of product diversification. The availability of quality raw jute and shrinking acreage on one hand, and the failure of most jute mills to modernize has left the sector dependent on government support like packaging reservation. Only a section of the industry has diversified into non-packaging segments. There are some questions as assignments. And just take the questions from your worksheet. Worksheet say take a page number 173. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. And 7. Leaving 8, 9, 10, all the question has to be there on the book in the pencil. If not, be Quit India movement. Thank you. Most welcome. Yes. Enjoy your tiffin.